Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to today's session. So PFRDA Grade A 2025 Phase 2 is very near, and in the Phase 2 there is paper 2 which consists of your important subjects like economics, costing, commerce and accounts, pension, finance management. So there are so many of the subjects that you have to cover for the Phase 2 paper 2. So for that we have brought for you the marathon so that you have the good revision of your Phase 2 paper 2 section. Okay, so for your Phase 2 paper 2 we have brought this marathon for you. Today we will be discussing the questions from economics and costing. Okay, so these are the two components from which we will be discussing the questions in today's marathon session, and tomorrow's marathon session will consist of the questions from finance management and such. So you can understand that this marathon is going to be very important for your Phase 2 paper 2 preparation, as this is going to help you to understand that where you are lacking, which mistakes you are making in answering the questions. Okay, so today let's discuss the MCQs, and through the MCQs let's know that how much you remember the concepts as well as how much is your level of preparation, what is the level of your preparation, and where you are making the mistakes. Okay, so do analyze the MCQs and do give the right answer of the questions. Okay, so give me a thumbs up if I'm clearly audible and visible and everything is fine. So for your PFRDA Grade A 2025 Phase 2 paper 2 we have launched this marathon for all of you, which will consist of your paper 2 subjects, and the MCQs will be discussed with you. Okay, so today is the marathon, as well as tomorrow there will be marathon, and after that there will be one more marathon to cover all your subjects through the MCQs and to cover the subjects for your paper 2 Phase 2. Okay, so let's get started. First of all, before starting with the session, there is Shubh Navratri offers that is going on, and this is valid till 30th September 2025. So if you want to practice a lot of MCQs, because you know that Phase 2 paper 2, this is very important paper, okay, in your Phase 2, and to clear the Phase 2 you have to give a lot of MCQs, you have to give the answers of a lot of MCQs, you have to try a lot of MCQs. So for that you can take the test series through which you can practice more than 10,000 MCQs. Okay, so for your examination for the PFRDA Grade A, there is flat 75% off that is going on. For all the regulatory body courses, there is flat 75% off that is going on. You can use the code festival75, so you can get the test series for your MCQ practice from the examination point of view. Anyway, you are getting these marathon sessions also for your MCQ practice, but if you want to practice even more MCQs, more number of MCQs, so for that you can take the test series for your PFRDA Grade A examination, okay, for the Phase 2. And there is flat 75% off that is going on, that is valid till tomorrow. Now coming to the first question, I hope you will be easily able to answer this question. So read the question very carefully and then try to answer the questions. Okay, so there will be 30 questions from economics and there will be 30 questions from costing. Okay, and I will suggest you that in this session the economics questions, they are the new questions, they have not been done before the Phase 1. So I will suggest you that do see the Phase 1 marathon also. Like during the Phase 1 for the paper 2 we conducted a marathon for your economics, costing, commerce and accounts and such. Okay, so when the Phase 1 marathon we were conducting, so we brought a lot of good questions in that. So do see the Phase 1 marathon also so that you can attempt a lot of MCQs. Okay, and here I have brought these 30 new questions for you from economics. So give me the right answer of the first question. Which of the following scenarios correctly illustrate the difference between revenue expenditure and capital expenditure? Revenue expenditure is the regular expenditure. Capital expenditure, this is a one-time big expenditure that happens. So anyone who is able to answer the question, try this, because see, you have to understand that are you able to use the elimination method, are you able to use the logic. Okay, I'm getting the answers C and A. Let's see which answer is correct. The cost of repairing an old office building. So repairing, is it a one-time expenditure? No, it keeps on happening. Maybe on the monthly basis the repair is required or yearly basis the repair is required. So it is a regular expenditure. Okay, if a new building is being established, that is a capital expenditure. If a new building is being established, that is a capital expenditure. But the repair and the maintenance, this is a revenue expenditure. Got it? The payment of salaries to employees, this is also regular expenditure, so it is revenue expenditure. The purchase of a new factory is being purchased, a new factory is being built, so that is capital expenditure. Correct. It will provide the long-term benefits. Correct. Adds value to the business. Correct. So the annual insurance premium, again annual means regular insurance premiums, so this is also
the regular expenditure, so it is not capital, it is revenue expenditure. Construction of a new office building is treated as revenue expenditure. No, it is treated as capital expenditure. So only the C statement is correct, and that's why your answer is C. Very good, everyone. Good to see. So revenue expenditure is the regular expenditure of the government that does not increase the asset and does not decrease the liability of the government. Okay, so it does not increase the asset, it does not decrease the liability of the government. And capital expenditure, it increases the asset. So this is the kind of expenditure that increase the asset and decrease the liability. Okay, so government is spending to increase the asset or to decrease the liability. So revenue expenditure is regular expenditure that is temporary in nature, or it is regular, we can say it is regular in nature, recurring in nature. Long term, the capital expenditure is a long term investment, it is long term expenditure that affects the economic condition and affects the condition for a long period of time. Now the receipts also, there are revenue receipts and capital receipts. Revenue receipts are the regular receipts in the form of tax revenue and non-tax revenue, fees, fines, dividends, interest receipts. Capital receipts, they decrease the asset. So through disinvestment, the government can receive the money, or they increase the liability. So by taking the loan, the government receives the money. So the receipts of the government is revenue receipts, regular receipts, and capital receipts that decrease the asset or increase the liability. So government is getting the money by decreasing the asset or by increasing its liability. Now coming to the next question, try to answer this question. A government would most likely implement a contractionary fiscal policy in response to which of the following economic conditions? So there is a contractionary fiscal policy that is being adopted. Now this is in response to which of the following economic condition? So there is fiscal policy, either it can be contractionary or it can be expansionary. Contractionary means that the government is trying to control the economic activities, okay, or the government is trying to control the inflation. Basically the government is trying to control the inflation. And expansionary fiscal policy is for boosting the economic activities. Okay, so the expansionary fiscal policy and contractionary fiscal policy is there. Contractionary fiscal policy decrease the government expenditure and increase the taxes or increase the taxes. So government will be decreasing the government expenditure and increasing the taxes in case of controlling the inflation. So when there is high inflation, to control the inflation, there is contractionary fiscal policy that is adopted. Okay, so this is the idea. If there is high unemployment, if there is recessionary condition, contractionary phase of business cycle, or there is low consumer confidence, in this case when the economic activities are low, to boost the economic activities, the government increases the government expenditure or decreases the taxes. So this is known as expansionary fiscal policy. So I hope you are very much clear that contractionary fiscal policy is adopted to control the high inflation, to control the high inflation. Okay, and the expansionary fiscal policy is adopted to boost the economic activities, to decrease the unemployment, to increase the consumer confidence, to bring the economy out of recession or contraction. Okay, so expansionary fiscal policy is adopted for the other parts. Chalo. So this is the idea, high inflation, so contractionary fiscal policy, economic slowdown, so expansionary fiscal policy to boost the economic activity. Coming to the next question, which of the following statements regarding SLR or CRR is or are correct? So SLR is your statutory liquidity ratio and CRR is your cash reserve ratio. Both are the reserve requirement that the banks have to keep the reserves with themselves or with the RBI. Okay, so which of the following statements regarding SLR or CRR is or are correct, that you have to tell me. First of all, SLR can be maintained in the form of cash, gold or approved government securities. Absolutely correct. SLR is to be maintained with the RBI. So no, SLR is to be maintained with the banks themselves. Okay, CRR has to be maintained with the RBI, but the SLR has to be maintained with the banks themselves. Okay, so this is wrong. Banks earn returns on CRR? No. The CRR, the banks have to keep CRR with RBI in the form of cash, and RBI do not provide any returns on this cash. Okay, on the SLR, on the gold, because gold prices keeps on increasing, so there are returns that come on the gold because gold prices are increasing, so bank get benefit, as well as on the government securities the banks get interest. So on the SLR there are returns that the banks are getting. Okay, so on the CRR there are no returns, on the SLR there are returns that the banks are earning. So here the answer is only one. Only one. Very good, because second and third statements both are wrong. Okay, so I hope this is clear that SLR is to be maintained with the banks themselves, as well as banks do not earn
returns on the CRR. So there is banks do not earn returns on CRR, but there are returns earned on SLR. So second and third statements are wrong. Only one is the answer here. Okay. So this is about SLR. This is about CRR. SLR is to be maintained with banks in cash, gold, or government securities. Banks earn return on the SLR, but there are no returns on the CRR. Okay. Next is, suppose in a given year, read the question very carefully. I am giving you some time to read the question. You have 35 seconds. Read the question here and answer. Suppose in a given year, India reports the following. Export of goods. Export is $200 billion. Export minus import. So how much is coming in? Export minus import. So that means India's balance of trade. India's balance of trade is your export receipts minus import payments. Okay. So export of goods. Balance of trade talks about the trade in goods. The trade in goods. So export receipts from the goods trade, import payments of the goods. Okay. So export receipt for the goods is 200, while the import payment for the goods, for the import of goods, is 250 billion. So balance of trade is in deficit. Absolutely correct. The balance of trade. See, in the current account, there is trade in goods. That is also called as visible trade or balance of trade. Okay. There is trade in services. And there is transfer payments. Remittances are coming in, remittances are flowing outwards. Okay. So trade in services and transfer payment, they are combined, called as invisible payments or invisible trade. Okay. So trade in goods is visible trade or balance of trade. So in the trade in goods, there is deficit because we have received less than what we have paid. So India's balance of trade is in deficit. Okay. Net unilateral transfers are positive. So net remittances, that means transfer payment is unilateral. Payment. So transfer payments are unilateral payments. Transfer payments are coming in, so they are one-sided payments. Okay, because you are not providing any service for that, or we are giving the transfer payment, we are giving the unilateral payment as we are not getting any service. So net remittances are the net unilateral transfers, or the transfer payments are unilateral transfers. So they are positive. Yes, they are $40 billion in positive. Net means how much we have received minus how much we have paid. So the net is in positive. That means the net amount is positive. India's current account will necessarily be in surplus. So current account consists of trade in goods, that is in deficit of $50 billion, and trade in surplus data is not given, so we will consider it as 0. Transfer payments are $40 billion positive. So negative 50, positive 40. So that means we have negative $10 billion. So the India's current account, the current account is in surplus, or it will necessarily be in surplus? No, as the negative is higher than the positive. So it is in deficit. So the third statement is wrong. First and second are correct, and that's why the right answer is 1 and 2. Okay. So here you can see that the balance of trade is the export receipts from the goods minus the import payments for the goods. Okay. So that is $50 billion, that is in deficit. Net unilateral transfers or the transfer payment is in positive. The current account balance of trade plus net transfers, so that is in negative. So balance of trade, net transfers, trade in services is not given, so we will consider it 0. So the current account is in deficit of $10 billion. Coming to the next question. So this kind of question, see, it is not very complicated, just the basic. If you have the basic clarity, you will be able to answer such kind of question. It was from a tougher side. So if a tough question comes, that will look like the previous one. Now trying to answer this. If the Indian rupee is depreciating, this will benefit which category? It will benefit exporters or importers, or if the depreciation happens, which side benefits and which side loses? So exporter benefits or importer benefits? Exporter loses or importer loses? If the Indian rupee depreciates sharply against the US dollar, which of the following situation will happen? Basically, which will be in the beneficial situation, which will be in the losing situation? So here exporters of IT service lose. No, if you have studied about the depreciation, you will know that in the depreciation, if the depreciation is happening of Indian rupees, exporters gain, importers lose. So exporters will lose? No. Importers will benefit? No. Both exporters and importers will gain? No. Exporters gain, importers lose. Okay, exporters gain,
importers lose. So both exporters and importers will lose? No. Exporter gain, importer lose. Exporter will gain, importer will lose. Absolutely correct. This is the correct statement. Okay, so this is what I wanted to show you here. So basically, in the case of depreciation, before $1 was equal to 50 rupees, now $1 is equal to 70 rupees. So this is the case of depreciation. Here the depreciation has happened. In the case of depreciation, we have to give more rupees to get $1. In this case, the exports they gain, the exporters they gain, and importers they lose. Okay. Now when the appreciation happens, so here basically when the depreciation is happening, the exchange rate has increased. We have to give more rupees to get $1. Value of rupee depreciates, and the exporters they gain, importers lose. In the case of appreciation, $1 was equal to 50 rupees. Now $1 is equal to 35 rupees. That means exchange rate has decreased. We have to give less rupees to get $1. So this is appreciation, in which importers gain. In the case of appreciation, importers gain and exporters lose. Got it? Any confusion? You have to remember this. Okay, this is what you have to remember. In the case of appreciation, exporters lose, importers gain. Coming to the next question. Now try to answer this question, not a difficult one, just the basic features of the monopolistic market you must be aware about. So as per the characteristics of the monopolistic market, which of the following statement is incorrect? That's it. So try to answer this. So products are in the monopolistic market, there are differentiated products that are close substitutes of each other. Absolutely correct. Firms enjoy some control over price. Yes, because the firms have differentiated product, that's why they enjoy some control over the price. Okay, because in the monopolistic market, let's say the soap market we are talking about, there are large number of sellers. Lux, Dettol, Santoor, they have some control over their price. Firms face a downward sloping demand curve. Yes, in the monopolistic market as well as in the monopoly also there is downward sloping demand curve. There are significant barriers to entry. No, in the monopolistic market there is no barrier to entry or exit. So here the answer is D. Absolutely correct. Non-price competition happens, such as advertisement, branding plays an important role. Yes, in the soap market you must have seen a lot of ads for Lux, Dettol, Santoor, so they are branding themselves. How you know that Dove provides a milky texture, Lux provides a good fragrance to your body, or Dettol provides no germs, or Dettol kills the germs? So that is through advertisement and branding. So in the monopolistic market there is a lot of non-price competition. So only the D statement is incorrect, and that's why the answer is D. Large number of buyers and sellers in the monopolistic competition, product differentiation, freedom of entry and exit, selling cost, that means advertisement cost and such, pricing decision are taken by the firms, lack of perfect knowledge, that means the buyers, they do not actually know much about the product until they have used it. Non-price competition is there. So these are the main features of the different competition. I hope you know the main characteristics of different competition. Perfect competition has large number of buyers and sellers, homogeneous product that are perfect substitutes of each other. Okay. Monopolistic competition has large number of buyers and sellers, differentiated product that are close substitute. Oligopoly has few firms, few large firms that have a major market share, homogeneous or differentiated product. There can be limited entry or exit. That means there are barriers. There are barriers to entry and exit. Okay. Monopoly is only one seller, unique product without close substitute, strong barriers to entry. Now coming to the next question, if you know the simple equations, you will be able to answer this question. If you know the concept, you will be able to answer the question. First of all, the equilibrium point in any market, the equilibrium is where the marginal revenue is equal to marginal cost, and the marginal cost cut the MR from below. Now if you know about the equilibrium, you will be able to answer this question. Okay, so try to answer. So basically a firm earns supernormal profits when the average revenue is greater than average cost. So in the perfect competition, average revenue is equal to marginal revenue. So average revenue is greater than the average cost. The marginal cost at the equilibrium point, the MC should be equal to MR. So this is wrong. MC is not less than MR. MC should be equal to MR. Okay, at the equilibrium point. In the supernormal profits, or in any case, the MR should be equal to MC, and MC cuts MR from below. So at the equilibrium point, this is not true, and in the supernormal profit, average revenue is greater than EC. This is correct.
but this statement becomes wrong. A firm earns normal profit when the average revenue is equal to average cost and at the equilibrium point where the MC is equal to MR. So this is correct. A firm incurs losses when the average revenue is less than average cost. So correct. And MC at the equilibrium, MC is equal to MR. This is also correct. So here the right answer is B. That is 2 and 3. Very good. Okay. So basically, at all the places, MC should be equal to MR. At the equilibrium point, the MC should be equal to MR. The marginal cost is equal to MR. Okay. When there are supernormal profits, average revenue is greater than average cost. Average revenue is greater than average cost. When there is normal profit, average revenue is equal to average cost. At the loss point, average revenue is less than average cost. Okay. In the long run, in the perfect competition, the equilibrium is always at normal profit where the average revenue equal to average cost, and it is also equal to, like, all the points are falling here, and the average cost is at the minimum. In the long run, in perfect competition, there is minimum of average cost. Okay. Now coming to the next question, read the question carefully and try to answer. In which of the following market model the duopolist decides about the price and assumes the rival will keep their price constant? With the unlimited production capacity, each firm has unlimited production capacity and the firms have equilibrium price at the competitive level. So try to answer this question. Is it Cournot oligopoly model, Bertrand oligopoly model, Stackelberg oligopoly model, Chamberlain or Edgeworth? So I hope you know. You're most welcome, MR. I'm sorry I'm not feeling very well, but I hope you all are able to understand. Thank you so much. Okay, so here the answer is Bertrand oligopoly model. Okay, so Bertrand oligopoly is the answer here. A previous year question has come from this point also. Okay, so let's understand about the different models in a single point. So Cournot duopoly model, it talks about that the firm will decide its output thinking that the rival will not change its output. Okay, so in the Cournot model, the output is the main factor. A stable equilibrium is reached in the market, which means the solution provided by Cournot is stable. That means there is an equilibrium. In the Cournot model, there is an equilibrium that can be achieved or that will be achieved. So Cournot model says that a firm decides its output thinking that the other firm will not change its output. In the Bertrand model, the firm thinks that I will change my price, the other firm will not change its price. So here the main component is price. There is unlimited production capacity each firm has, and the equilibrium price is always competitive price, that is the perfect competition price, we can say. Okay, Edgeworth model, in the Edgeworth model, it is the same assumption of the Bertrand model is assumed. So in the Edgeworth model, it is assumed that the firm will decide its price thinking that the other firm will not change its price. But in the Edgeworth model, there is limited production capacity. There is limited production capacity. Due to the limited production capacity, there is perpetual disequilibrium. The price keeps oscillating or moving between the monopoly price and the competitive price. Okay, so the Bertrand model and the Edgeworth model have assumed the same thing, that the firm will decide its price thinking that the other firm will not change its price. But in the Bertrand model, there is unlimited production capacity, due to which the equilibrium is achieved at the competitive price. But in the Edgeworth model, there is limited production capacity. That's why there is perpetual disequilibrium and price keeps oscillating between the monopoly price and the competitive price, and there is no equilibrium that is achieved. There is always disequilibrium that is present. Okay, so the difference between the Edgeworth and the Bertrand is also written here. In the Edgeworth model, there is limited production capacity and there is no equilibrium. In the Bertrand, there is unlimited production capacity and there is equilibrium that is achieved. Chalo, coming to the next question, try to answer this. P. Sweezy is published in an article in which he introduced the Kinked demand curve. As per the Kinked demand curve, the price is at the kinked portion and the demand curve above the price is elastic demand curve, and the demand curve below the price is inelastic demand curve. Okay, so there is sticky price. Above the price, the Kinked demand curve is elastic, and below the price, the Kinked demand curve is inelastic. So here the answer is E.
not perfectly elastic or perfectly inelastic. It is elastic and inelastic. Okay, so it is elastic and inelastic. So above the price elastic and below the price inelastic. So that is the idea. Now Chamberlain has said that there will be maximum joint profits that can be earned. Maximum joint profits will be earned if the firms know that they are mutually interdependent and they recognize their interdependence. Then the firms can have the maximum joint profits. Okay, and Sweezy, Hall and Hitch, they have said that there is Kinked demand curve. Above the price there is elastic demand curve, below the price there is inelastic demand curve. Okay, next is, according to Milton Friedman's theory of demand for money, which of the following statement best explains why the demand for money is negatively related to rate of return on bonds and equities? So basically Milton Friedman said that the demand for money depends upon the nominal income. So your demand for money, how much you will demand the money, how much you will hold the money, that will depend upon your nominal income. But it also depends upon the returns that you are getting on equity, bond, and the returns that you are getting on your savings and such. Okay, so basically if the returns are high, would you want to hold more money? Would you not want to invest the money? So when the returns are high, you would want to invest more money. When the returns are high, you will invest the money in the equity or bonds or your savings, and you will demand less money. So basically when the returns are high, when returns on bond and equity increase, the opportunity cost, the cost of holding the money has increased because there are more returns. So the cost of holding the money has increased, so the individuals will hold less money. This is the idea. Okay, so C is the answer here. So C is the answer here. All the other statements are saying the opposite or something else. So C is the answer here. When more returns, if you are getting more returns, you will invest that money, you will want to hold less money. Okay, so let's say you have 100 rupees, you can hold this money or you can invest this money. So let's say you were, when the returns are low, you will invest only 10 rupees, you will hold 90 rupees. But when the returns are very high, you will invest, let's say 80 rupees and you are holding only 20 rupees. So when the returns are high, you will hold less money. That is the idea. So this is the idea that demand for money depends upon the nominal income, but it also depends upon the returns. When the returns are high, you will want to hold less money from your nominal income. Now, coming to the next question. Try to answer this question. So basically, company X is headquartered in Delhi, India, and it has a production facility at Beijing, China. The output of the production facility is part of China's dash, and the profit of the company which are coming back to India are part of India's dash. So basically, the output is happening in China. The factory is established in China and the output is produced in China. So the output is being produced in domestic territory of China. So it will come under the gross domestic product of China. It will come under the gross domestic product of China. Okay, because it is in the domestic territory of China. The profits of the company, now the profits are coming to India. Now from the land you are earning rent, from the labor you are earning wages, from your capital you are earning interest, from your entrepreneurship you are earning profit. So this is all the rent, wages, interest and profit is factor income. So when the factor income is coming in India, this is the net, let's say this is the net factor income from abroad. So net factor income from abroad or the factor income from abroad is added in India's GNP. The net factor, so in the GNP of India, in the national product, basically in the national product, in the gross national product, the net factor income from abroad is added. So factor income from abroad or the net factor income from abroad is added in the gross national product of India. So the answer here is A. The output that is being produced in China will come in GDP of China, in the gross domestic product, because that is produced in the domestic territory of China. So GDP of China. The profit of the company that is coming to India, that is the factor income from abroad that we are getting, will come in GNP. So basically in the GDP, add the net factor income from abroad. So in the GDP of India, add the net factor income from abroad. So the factor income that we have received from abroad has to be added to come to the GNP of India. Okay, got it? So the profit, interest, wages that we are earning from abroad will be added in factor income earned from abroad. That is added in GNP of India.
Now coming to the next question, try to answer the question. Basically, the question is saying that the quantity, how we will be able to recognize that the production is increasing in the country. The production is increasing in the country, the quantity of goods produced in the country is increasing. So through which variable we will be able to know that? Nominal GDP, it has current production, and we multiply the current production with the current prices. So nominal GDP can increase when the current prices are increasing. So the nominal GDP cannot show the actual increase in production, because the nominal GDP might be increasing because of prices only. We take real GDP. Real GDP shows, the real GDP formula is current production multiplied by constant prices or base year prices. So prices of some previous year. So prices cannot change, or prices are constant, they are not changing. So when the production increases, then only real GDP will increase. And through the real GDP, if the real GDP is increasing, we can say that yes, the production is increasing. So real GDP is actual variable, is actual factor that can show us the increase in production. So remember this very clearly, that real GDP shows us the increase in production. That's why real GDP is said to be the good measure of economic growth, because when the real GDP is increasing, that means production is increasing, that means growth is happening in the country. Okay, so yes, very good, real GDP is the answer. Nominal GDP, it takes into account the current prices. If the current prices are increasing, then the nominal GDP can also increase. So it cannot show us the real picture of the economic activity. Real GDP takes the base prices or base year prices or constant prices. So when the production increases, then only real GDP increases, and real GDP can show us the increase in production or the economic growth in the country. Okay, coming to the next question. Now the question is from the Cournot's duopoly model. Okay, so Cournot's duopoly model, we have seen a question from this in the SEBI examination. From Bertrand duopoly model, we have seen the question in phase 2 in the PFRDA Grade A examination. So Cournot model and duopoly, Cournot model and Bertrand model, just try to remember the basic idea from these models. So according to Cournot's duopoly model, which of the following statement is most accurate regarding the behavior and equilibrium of firms in a duopolistic market? So basically, read the statements. Okay, I'm getting the answer D. No, actually Cournot duopoly model, think about the assumption. Cournot duopoly model says that the firm decides its output thinking that the other firm will not change its output. That means the firm is deciding its output thinking that the other firm will not change its output. That means the firms are not considering their interdependence. It was only Chamberlain that said that the firms should recognize their interdependence. The Bertrand or Cournot have not said this. Cournot and Bertrand both models says that one firm is taking a decision thinking that other firm will not change its output or price. So you can understand that the firms are not considering their interdependence. Okay. No, it is Cournot now. In the Chamberlain model, it was said that the firms will recognize their interdependence. But the Cournot and Bertrand model, they do not recognize the interdependence. Okay. So they say that we will change our output, the other firm will not change its output. That means they are not considering the interdependence. So this is wrong. Actually, C is correct, because Cournot equilibrium results in each firm producing half of the total. Or let's read the other statements. Even half is not correct. Okay, so E is the correct answer. Okay, so half of the total, no, this is also incorrect. Each firm fully anticipate the rival output reaction, no, because one firm assumes that the other firm will not change its output. Both firms engage in price competition, no. Cournot model only talks about output. C is also incorrect, because half of the total production is not produced. Each firm, there are two firms. Each firm is producing 1/3 of the output. So each firm assumes the rival's output remain constant. So you can understand that each firm assumes that the other firm's output will remain constant. So this is correct, leading to an eventual equilibrium. Equilibrium is achieved, that's correct, where each produces 1/3 of the total market output. This is correct. How is it so? I have told you, like if you have seen the sessions in the course and such, I have told you that each firm will be at equilibrium, where each firm is producing 1/n+1. Each firm is producing 1/n+1. N means the number of firms. In the duopoly market, how many firms are there? Two firms are there. So the number of firms is n = 2. So each firm is producing 1/n+1.
2 plus 1. So there are 2 farms. So that means 1/3. So each farm is producing 1/3. Each farm is producing 1/3. That means total industry output is n upon n plus 1. So number of farms is 2. 2 plus 1, 3. So the total industry output is 2/3. Each farm is producing 1/3. So if you want to see that how much each farm is producing, that is basically 1 upon n plus 1. And total industry output, each farm output, industry output is n plus 1. Okay, so this is the idea. Okay, any confusion here? So each farm, in the Cournot model, each farm assumes that the rival will keep its output constant. There is the equilibrium that is achieved at at the production level 1 upon n plus 1, where each farm is producing, if there are only 2 farms in duopoly, so each farm is producing 1/3 of the output. Chalo. Coming to the next one, that is this. Which of the following is not one of the assumptions under classical theory of output and employment? So if you are not having the time to read the complete classical theory, at least think about the assumptions, or at least keep the assumptions in mind. Okay. Chalo. Perfect competition in the labor market and the product market. Yes, classical theory assumes perfect competition in the labor and product market. Money is only used for transaction motive. Yes, money is only used as a medium of exchange, for transaction motive. Savings and investment equality depends on interest rate. Yes, as per classical theory, savings depend upon interest rate. Investment also depends upon the interest rate. So the equilibrium between saving and investment, is because of interest rate. Okay, prices and wages are sticky. No, classicals believe that prices and wages are flexible in nature. So this is wrong. Equilibrium is always at full employment. Correct. So prices and wages are sticky. That is wrong, and that's why this is not one of the assumptions. So classicals believe that the wages and prices are perfectly flexible. They are completely flexible. Okay. Keynesian assumption. So I have given you the Keynesian assumption here also, so that you can just read them through. That aggregate demand is the most important factor as per Keynes. Aggregate demand is the most important factor. Prices and especially wages respond slowly to changes. So as per Keynes, prices and especially wages, they are sticky in nature. Okay. So this is the idea. Now coming to the next question. What would be the change in income when MPS is 0.4 and increase in investment is 100? So with the increase in investment, what is the increase in income? That you have to tell. That you can tell through investment multiplier. So investment multiplier has the formula 1 upon 1 minus MPC. That is 1 upon NPS. So MPS is 0.4. So 1 upon 0.4. That is 2.5. So investment multiplier is 2.5. Investment multiplier is 2.5. 2.5. Now change in investment is 100. Change in income will be 250. Right? So here I am getting the answer. What is the answer here? Got it? Yes, C is the answer here. Okay. So investment multiplier, you have to calculate investment multiplier. That is 1 upon 0 MPS, that is 0.4. So that is 2.5. So investment multiplier is 2.5. That shows that with the change in investment of 100, there is change in income. So 100 multiplied by 2.5, that is change in income 250. Chalo. So C is the answer here. And if the multiplier is increasing, what do you think? If the MPC is if the MPS is increasing, the multiplier will increase or decrease. The multiplier will increase or decrease. If the MPS is increasing, the multiplier will decrease. If the MPC is increasing, the multiplier will increase. Okay. So if the MPS is increasing, multiplier decreases. If the MPC increases, so MPC increases, multiplier also increases. MPS increases, multiplier decreases. So MPS and multiplier have inverse relationship. Okay. Chalo. Coming to the next question. As per Keynes liquidity preference theory, the speculative demand for money is dash related to the interest rate, and transaction demand for money is positively related to. As per Keynes liquidity preference theory, the speculative demand for money is
the speculative demand for money is inversely related to interest rate, and the transaction demand for money is positively related to level of income. So the answer here is C. So that is the answer. The speculative demand for money has inverse relationship with rate of interest. Transactional demand for money has a positive relationship with the income. Coming to the next question, read the question carefully and try to answer this. I'm giving you 15 more seconds. Read it. So consider the following components of India's money supply. Okay. Now you have to tell me that if the RBI wants to double the money supply without changing the money multiplier, which of the following actions will be most directly effective? What is the formula of money supply? The money supply with the high powered money. The formula is that money supply, or basically the money multiplier, is equal to money supply divided by high powered money. Okay. So if money multiplier is not changing, okay, so how the money supply can change? So basically money multiplier is constant, so high powered money has to increase. Basic increase in high powered money. Money multiplier without changing the money multiplier. Money multiplier cannot change. If money multiplier cannot change, that means high powered money has to increase the money supply. So RBI wants to double the money supply without changing the money multiplier. So if money multiplier cannot change, so high power money will have to increase the money supply. Got it? Read the question carefully. If the Reserve Bank of India wants to double the money supply has to be doubled, and the money multiplier without changing the money multiplier cannot change. Okay. So here the money supply depends upon money multiplier and high powered money. If money multiplier is not changing, that means high powered money has to change, and money supply and high powered money have a direct relationship. Okay. So increase in high powered money is required. Directly. Encourage the public to shift savings from demand deposits to time deposits doesn't matter, because money supply in India, we take money supply as M3, that is M1 plus time deposits. M1 is your currency with public plus demand deposits plus other deposits, right? So M3 is currency with public, demand deposit plus other deposit plus time deposit. So we are just shifting demand deposits to time deposit. The M3 will remain same. So this is not correct. Increase the proportion of cash the public holds. If public is holding more money and demand deposits are less, that means there will be less money multiplier, because if the public, basically the money multiplier depends upon the cash with public or currency with public divided by deposits, and the money multiplier also depends upon reserves to deposits. So if there are more reserves, or if there is more currency the public is holding as compared to the deposits, the money multiplier will be low. So remember that the money multiplier has an inverse relationship with currency with public to demand deposits or to deposits, and reserves to deposit. So if the public hold more cash in relation to the demand deposits, that means public is holding more cash in comparison to the deposits, so there will be less credit creation, there will be less money multiplier. Okay, so remember this. So this is not true, because if money multiplier is decreasing, the money supply should decrease, not increase. Raise the interest rate. So bonds, and remember, bonds and national savings certificates, they are not a part of money multiplier. Sorry, they are not a part of money supply. Money supply does not include the bonds and national savings certificates or any kind of certificates. Money supply only includes the deposits as well as the currency with public. Okay, so these are wrong. Now coming to the next question. Coming to the answer. So read the question carefully here. Read the answer here so that you have the clarity. So high powered money, it includes currency in circulation, bankers deposit with the RBI plus other deposits. Okay, and the money multiplier, money supply is equal to money multiplier multiplied by high powered money. If money multiplier is not changing, with the increase in high powered money, money supply will increase. Money multiplier depends upon the currency deposit ratio, the currency to deposit ratio, as well as currency to deposit ratio, as well as reserve ratio, reserve to deposit ratio. If reserve to deposit ratio or currency to deposit ratio is increasing, that means, if these are increasing, that means money multiplier is decreasing. Okay, now coming to the next question, try to answer this. IS curve will be steeper. IS curve will be steeper
Because of which two factors? So IS curve shows the relation between the rate of interest and level of income. IS curve shows the different combination of rate of interest and level of income. IS curve will be steeper when investment demand is less elastic to changes in rate of interest. When investment demand is less elastic, is less responsive to the rate of interest, and there is low multiplier. There is low multiplier. So 1 and 3 is the answer here. 1 and 3. So here the answer is C. The IS curve will be flatter. The IS curve will be flat when there is high investment demand elasticity with the rate of interest and there is high multiplier. Remember this, okay? So this is the answer. C is the answer here. Remember that investment demand is more elastic to the rate of interest and there is high multiplier. High elasticity of investment demand and high multiplier means flat IS curve. Steep IS curve means low investment demand elasticity, low multiplier. So then there is steep IS curve. In the LM curve, steeper LM curve, more elastic demand for money for income. Demand for money is more elastic to the income and demand for money is less elastic to rate of interest. Flatter LM curve, there is demand for money is less elastic to the level of income and demand for money is more elastic to the rate of interest. Then we have flatter LM curve. Chalo, coming to the next question. If aggregate demand is this, rightward shift in IS curve. IS curve will shift rightward. So at the same rate of interest, the level of income will increase. The level of income will increase. At the same rate of interest, the rightward shift will happen in the IS curve. The level of income will increase because of decrease in autonomous investment? No. Because of decrease in consumption expenditure? No. Because of decrease in lump sum taxes. When the taxes are decreasing, people will have more money to spend. More money to spend means that there will be more demand, there will be more production, there will be more income. So yes, when the taxes are decreasing, then the income will increase, then the IS curve will shift rightward. Okay, so yes, C is the right answer here. So IS curve will shift rightwards. IS curve will shift rightwards when there is increase in autonomous investment, autonomous government expenditure, autonomous net exports, or there is increase in autonomous consumption, or there is decrease in taxes, autonomous taxes. Okay, the IS curve will shift leftwards. IS curve will shift leftwards when there is decrease in autonomous investment, autonomous government expenditure, autonomous net exports, or there is decrease in autonomous consumption, or there is increase in autonomous taxes. Chalo, coming to the next question. Read the question carefully and try to answer this question. So when an economy is in a situation where the LM curve becomes perfectly elastic, LM curve becomes perfectly elastic. This is perfectly elastic LM curve. This happens when there is liquidity trap. When there is liquidity trap and the demand for money is perfectly elastic. So when demand for money is perfectly elastic, the LM curve is perfectly elastic. So LM curve is perfectly elastic and the IS curve is downward sloping. This is IS curve. So in this case, which of the following outcomes is most likely to occur? LM curve will be vertical? No, LM curve is horizontal. Fiscal policy is ineffective in changing the level of income. No, this is not true, because if the government expenditure is increasing or taxes are reducing, IS curve will shift rightwards, and with the rightward shift in IS curve, the level of income will increase. If the government expenditure is increasing, we have just discussed now that if government expenditure is increasing or taxes are decreasing, IS curve will shift rightwards. If there is rightward shift in IS curve, the level of income will increase. So this is wrong. Monetary policy is effective? No, monetary policy is not effective because the LM curve is horizontal. So even if money supply, monetary policy means even if money supply is increasing or money supply is decreasing, LM curve cannot shift because it is horizontal. Okay, so this is also wrong. It is not effective. Monetary policy is ineffective. Increase in government expenditure can lead to increase in income. Yes, this is true. This is true. That means fiscal policy is effective. Got it? So D is the right answer here. So D is the right answer. Monetary policy is ineffective. Monetary policy is ineffective. Fiscal policy is effective. Okay. Chalo, coming to the next question. Which of the following scenarios best illustrates cost push inflation? So there are two kinds of inflation: demand pull inflation, cost push inflation. Demand pull inflation means demand is increasing, that's why the prices are increasing, the inflation is happening. Cost push inflation means cost of production is increasing. Either the wages are increasing, so cost of production is increasing, or oil prices are increasing, so cost of production is increasing. So which of the following best illustrates the cost push inflation? Very good. I have started getting the answer. The government reduces
personal income tax. If the government is reducing the personal income tax, so personal tax, income tax basically, if the government is reducing the income tax, people will have more money with themselves. Income tax is reduced, I will be left with more money to spend. So there will be more demand. With the demand, the prices will increase, but that is demand pull inflation. Increase in exports. If exports are increasing, that means the demand for our products are increasing, demand pull inflation. Increase in government expenditure. With more government expenditure, more demand, demand pull expenditure, demand pull inflation. Increase in import duties. If import duties are increasing, if the custom duties on import is increasing, that means the imported raw material, the imported machinery will become expensive. So imported raw material, imported machinery, tools, equipments for the factories will become expensive. If the cost of production is increasing, so that is cost push inflation. Okay. Increase in money supply, more money you have, more demand you will do, that is demand pull inflation. So all the other are the cases of demand pull inflation. Only increase in import duty is leading to cost push inflation. So increase in oil prices, so cost of production is becoming expensive, wages are increasing, cost of production is becoming expensive, or import duties are increasing. So cost of production is becoming expensive because raw material, machinery, tools, equipments, they are also imported. Okay. So this is the idea. Coming to the next question, read the question carefully and again try to answer the question. So here, this is the Phillips curve equation that inflation depends upon expected inflation. Inflation inversely depends upon the unemployment rate. Okay, that is, if the unemployment rate is increasing, inflation will decrease. So inflation inversely depends upon the unemployment. Inflation also depends on adverse supply shock. So if adverse supply shock is there, inflation will increase. Okay, so that is the idea. So now basically the question is saying that suddenly a large oil price shock has happened. The oil prices have started to increase. So this is adverse supply shock, or the prices of oil, the oil prices are increasing. When the oil prices are increasing, which of the following correctly describes the new equilibrium? So oil prices are increasing, short run Phillips curve shift leftward. If the Phillips curve, this is Phillips curve, if it is shifting leftward, that means inflation is decreasing, unemployment is decreasing. No. If the oil prices are increasing, inflation should increase. Short run Phillips curve shift upward. Short run Phillips curve should shift upward. So yes, when the oil price is increasing, the inflation will start increasing, the unemployment will also start increasing. Okay, so B is the correct answer, resulting in higher inflation at every unemployment level. So basically, if the oil prices are increasing, the inflation will start increasing in the economy, and at each and every unemployment level, let's say unemployment is this, at this unemployment level, the inflation will start increasing. So Phillips curve is shifting rightwards. At each and every unemployment level, there will be more inflation that is happening. Okay, so Phillips curve shift upward or rightwards, we can say. So whenever there is adverse supply shock, whenever there is oil prices that are rising and such, so there is upward shift in Phillips curve, or there is rightward shift in Phillips curve, which you can see. So basically oil prices are increasing, or there is adverse supply shock. So in this case, at each and every unemployment level, there is more inflation that is coming because of increase in oil prices. Okay, so unfavorable supply shock shifts the Phillips curve rightward. That is the idea. Now coming to the next question, try to answer this. Consider the following statements about the business cycle. Business cycle refers to the fluctuation in aggregate economic activity. Yes, the production is increasing, demand is increasing, production is decreasing, demand is decreasing and such. So first is correct. Business cycle is recurrent in nature but not strictly periodic. So yes, business cycle keeps on recurring. It keeps on happening. The economy is booming or the economy is contracting. So the business cycle is recurrent in nature, but it is not strictly periodic. We do not know when the boom will come. We do not know when the contraction or depression will come. Like the COVID-19 situation happened suddenly and the economy came under the recessionary tendency. So it is not strictly periodic. This is correct. The peak signifies that the production is increasing at a rapid rate. No, peak signifies that the production is at the highest level. Okay, when the expansion is happening, then the production is increasing at a rapid pace. But at the peak, the production is constant. Production is at the highest level, it is constant. Okay, so third is wrong. That's why the answer is A. Very good. 1 and 2.
So business cycle is synchronic in nature. Once it starts from one industry, it spreads to the other industries. Business cycle is recurrent, rhythmic in nature, but it is not periodical. Okay, so this is the idea. Now coming to the next question, this is from your previous year paper. So assume that currently there is a very high level of unemployment. So unemployment is very high. If the unemployment is very high in the economy and there is upward pressure on the prices, unemployment is high, upward pressure on the inflation. So this is what? This is what? Increase in unemployment, high inflation. So this is stagflation. In the case of stagflation, the unemployment is high and the inflation is high. Got it? This is stagflation. And when the Phillips curve shift rightward, that also calls for stagflation, because the inflation rate is increasing and the unemployment rate can also be increasing. Okay, so when the Phillips curve is shifting rightwards, this is also a case of the stagflation. So stagflation is when unemployment is increasing, inflation is increasing. So unemployment is increasing, inflation is increasing. So that is stagflation. Now coming to the next question, this is a question from SEMBI Grade A 2022 Phase 2. Such a question can come. So you must know about the conversion. You have to convert GNP at market price to NNP at factor cost. So what do you have to do? You have to convert the gross to net, national to national is same, market price to factor cost. So gross to net means deduct depreciation. Market price to factor cost means deduct indirect taxes, add the subsidies. So GNP at MP is 5069, deduct the depreciation, that is 626. Consumption of fixed capital is depreciation. Okay, deduct the indirect taxes 495 and add the subsidies, that is 69. So what is the answer that you are getting? That is your NNP at FC. The answer here is, can anyone tell me? Just calculate. Basic calculation. So the answer here is 4017. Okay, so that is the answer. So from the GNP at MP, you have to go to NNP at FC, deduct the depreciation, deduct the indirect taxes, add the subsidies. So this is the answer. So here, if you want to calculate the national income or the domestic income, there are three methods: income method, expenditure method, and the value added method. Okay, so income method says that add the compensation of employees, rent, interest, profit, and mixed income of self-employed, you will be able to calculate NDP at FC. Expenditure method says that add all the expenditure, you will be able to get GDP at MP. Okay, that is domestic income. Then you can convert it to national income. Gross value added just has the formula value of output minus intermediate consumption. These basic formulas you need to keep in mind. Okay, now coming to the next question. This question is telling you or is discussing with you all the consumption theories in one slide, so that you have the basic idea of all the consumption theories. Okay, so Keynes consumption function depends upon disposable income or the current income or the absolute income. Okay, so disposable income is the major determinant of Keynes consumption function. Life cycle hypothesis shows that the person knows the years he is going to live, and thus individuals plan a pattern of consumption based on expected earnings over their lifetime. So this is life cycle hypothesis, correct. As per G.S. Dusenberry, the consumption depends upon relative income. Consumption does not depend upon absolute income. So G.S. Dusenberry has given the relative income hypothesis where the consumption depends upon relative income. Kuznets consumption function has no intercept. So this is the consumption function given by Kuznets, that is consumption depends upon the income, the absolute income, and Kuznets has said that there is no autonomous consumption, there is no intercept. Okay, the APC is constant as per Kuznets. The APC is constant as income increases. The APC is constant, so this is wrong. The D is wrong. Okay, permanent income hypothesis also explains the transitory income. So permanent income hypothesis has mentioned about the transitory income. So this is your Keynesian consumption function, that is the consumption depends upon the autonomous consumption, the intercept term plus BY, okay, plus the induced. This is known as induced consumption. This is autonomous consumption. Okay, next is we have discussed about the relative income hypothesis, that J.S. Dusenberry said the consumption depends upon relative income and not absolute income. Kuznets has said that the consumption function is this: there is no autonomous consumption, there is no intercept term, as well as the APC remains constant if the income is increasing. Next is life cycle hypothesis, that says that the the people know that how many years they are going to live. Okay, and they
have the smooth consumption pattern, and they keep their money for the long period of time. Permanent income hypothesis, basically it says that your permanent consumption depends upon your permanent income, and the people expect the long term like the people frame their consumption, or they like their consumption depends upon long term expected income. Okay, and the Friedman has said that in the long run APC remains constant at high level and is equal to MPC, but in short run APC falls, as per Keynes also, as per Friedman also, APC falls in short run with MPC constant at low level. Okay, so this is the idea that in long run Friedman has said that Cournot is correct, that the APC is constant and the APC is equal to MPC, and both are very high level, both are at very high level. In the short run the Friedman has said that the Keynes is correct, that the APC falls as the income increases and the MPC is constant at a very low level, that is the idea. Now the Friedman has talked about permanent income as well as the transitory income. Transitory income is the temporary income, you are getting bonus and such, so that is the idea. Coming to the next question, so this is a bonus question. Which of the following is the major determinant of Keynes consumption function? Keynes consumption function depend upon interest rate, government spending, prices, investment, disposable income. So Keynes consumption function depends upon disposable income. Coming to the next question, again this is from PFRDA Grade A 2022 Phase 2. So here it is said that this is your IS curve, this is your LM curve. Okay, now what causes the shift, rightward shift in the IS or LM curve? So is it decrease in money supply? If the money supply is decreasing, LM curve will shift left. Okay, increase in demand for money, LM curve will shift left. So you should know that what causes the rightward or leftward shift in LM curve and what causes the rightward and leftward shift in IS curve. Okay, so decrease in government expenditure, this causes leftward shift in IS curve. Decrease in autonomous consumption, this causes leftward shift in IS curve. Increase in money supply, so increase in money supply causes rightward shift in LM curve, this causes the rightward shift in LM curve. Okay, so ISLM both curves show the relationship between rate of interest and level of income, and we have discussed the IS curve shifts rightward because of what factors? So LM curve shift rightward because of increase in money supply. Because of increase in money supply, the LM curve shift rightward, or because of decrease in demand for money, LM curve shift rightward. So remember, LM curve shift rightward when the money supply is increasing or demand for money is decreasing with the same level of income. Then LM curve shift rightward. Okay, LM curve shift leftward if the money supply is decreasing or demand for money is increasing at the same level of income. Now coming to the next question, again a question from PFRDA Grade A 2022 Phase 2. So this kind of questions come. What is the relationship between interest rate and investment? Very easy, very direct question. The interest rate and investment. If the rate of interest is increasing, the investment will, if the rate of interest is increasing, very high rate of interest, you have to pay a lot of interest, so investment will decrease. So there is a negative relationship between the interest rate and investment, right? Yes, very good. There is a negative relationship between interest rate and investment. Now coming to the next question, try to answer this question. Necessary good, see, necessary good and the luxury good, they both are the type of normal goods. Normal goods. With the increase in income, the demand for normal goods also increase. If your income is increasing, you will demand more of normal goods. That means you will demand more of necessary goods, more of luxury goods. But with the increase in income, the demand for necessary goods is increasing. With the increase in income, the demand for necessary good is increasing, but slightly only. Okay. With the increase in income, you will demand more of fruits, vegetable, but the demand is increasing slightly only. So in necessary good, income elasticity of demand is positive. That means with the increase in income, the demand for necessary goods also increase, but the income elasticity of demand is greater than 0, less than 1. Okay, it is less than 1. Income elasticity of demand is less than 1 for necessary goods. Luxury good, when your income increases, you want to buy gold for yourself or for your mother. When your income is increasing, you want to buy a new bike, or you want to buy a scooty, or you want to buy a car, you want to buy good clothes, good bag and such. So luxury goods, when your income is increasing, the demand for luxury goods also increase. So income elasticity of demand is positive for the luxury goods. Income is increasing, demand for luxury good increase, and here the income elasticity of demand is more than 1. Inferior goods, the income elasticity of demand is negative. That means income is increasing, the demand for inferior goods decrease. So all the above is correct here. Very good.
So this is the idea. I have told you that with the change in income, there is change in demand. So normal goods, in this case, necessary goods and luxury goods, with the income increasing, demand will increase. Demand for necessary goods increase slightly. So it has less than 1 income elasticity of demand. Luxury goods have higher income elasticity of demand, greater than 1. Inferior goods have negative income elasticity of demand. Okay. So coming to the last question. After this, there is a bonus question also. So let's see this question. So here the question is saying that consider the following statements. Okay. So there are 3 statements. Read the statements carefully. You will get the answer. Not a very difficult question, but complicated. Okay. So which of the following statements are correct, that you have to tell. So demand for commodities having a large number of close substitutes is less elastic. So when there are more substitutes, just think about it. When there are more substitutes, will there be less elasticity? More substitutes means more elastic, right? More substitutes means more elastic. Less substitutes means less elastic. So large number of close substitutes, more substitutes, so it should be more elastic. So first statement is directly wrong. Luxury items have highly elastic demand, right? Yes, luxury items have more elastic demand, highly elastic demand. Commodities whose consumption cannot easily be postponed, that means necessary goods. Necessary goods have less elastic demand, correct? So here the answer is B, very good. So everyone has given the right answer, good to see that. So 2 and 3, these statements are correct. Here you can see that perfectly inelastic demand, where the demand is not changing at all, there are no substitutes. So in this case, in case of no substitute, there is perfectly elastic. There is perfectly inelastic demand. Okay. No substitute means perfectly inelastic demand, where the demand does not change at all. Inelastic means for the necessary goods, or we can say the goods with less substitutes have inelastic demand, where the demand changes very slightly. Okay. Where the demand is not much elastic. Next is elastic demand. Elastic demand basically means that with the change in price, demand is changing a lot. For the luxury goods and the goods with more substitutes, they have elastic demand. Unit elastic demand, basically price and demand are changing by same percentage. Perfectly elastic demand is not important. Here the demand changes with the slight change in price. With the infinite small change in price, there is infinite change in demand. So that is perfectly elastic demand. Okay. Coming to the bonus question, try to answer this question. I hope you will be able to answer this question. If the cross elasticity of demand between two goods is negative, then the two goods are what? Basically, cross elasticity of demand shows that with the change in price of X, the demand for Y is changing. So basically, if the Pepsi, its price is increasing, the demand for Coke will increase. The demand for Coke will increase. So there is cross elasticity of demand. Similarly, when the petrol prices are increasing, the demand for car will decrease. So the petrol and car, they are complementary goods, and in the case of complementary goods, there is negative cross elasticity of demand. Everyone has given the right answer, good to see that. So complementary goods have negative cross elasticity of demand. Okay. So the complementary goods, negative cross elasticity of demand. If the price of petrol is increasing, the demand for car will decrease. Substitute goods have positive cross elasticity of demand. So this is it, done. Now Anjay sir will come and he will continue with the class, and here we have the costing. So thank you everyone, thank you for joining. Now Anjay sir will take over. Okay, guys, I hope technically everything is still fine. कहीं माइक कृतिका मैम को देख के ना चल रहा हो और मेरे आने पे बंद हो गया हो. Ma'am, just switch on the light. I'll just open this session on my mobile also, so that I can see the chat and everything. ठीक है. वेलकम कंपनी के बॉस का.
बॉस बूस कुछ नहीं भाई, हम भी टीचर ही हैं। ठीक है हिमांशु, चलिए। सो वी हैव लॉट ऑफ फैमिलियर फेसेस, रेदर पीपल आई कांट सी योर फेसेस। नीलेश, हिमांशु, great guys. So let me start with costing. See, costing first of all, exam में I think there would be 8 to 9 questions from your costing paper. And if I talk about phase 1, costing was not that difficult. Only section that was difficult was finance. But don't be much hopeful. ठीक है, डोंट बी मच होपफुल कि आपका फेज 2 भी इजी होगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, बट आई थिंक इट वुड बी अ टैड अबव व्हाट यू सॉ इन फेज 1। सो थोड़ा सा उस लेवल पे प्रिपेयर करके जाना। मैंने क्वेश्चंस थोड़े से टफ डाले हैं, थोड़े इजी भी हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं, सो दैट यू गेट द टेस्ट के फेज 2 में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आर यू गाइज रेडी? ठीक है, तो चलिए लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। In an organization, there are 4 employees receiving 20,000 for each for a specific job. Moreover, the overall overheads were valued at 40,000, but only 50% of the total overheads were allocated to this concentrated job, and total 100 units of the production was produced and finalized. You are required to calculate the per unit cost. सबसे पहले क्वेश्चन में यही देखना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। So what we have to find is we have to find the per unit cost. अब कॉस्ट हमारी क्या क्या इनकर हो रही है? देर आर 4 एम्प्लॉयज रिसीविंग 20,000, सो 4 इंटू 20K, इट मीन्स मेरा 80,000 तो एम्प्लॉय कॉस्ट में जा रहा है। मोर ओवर द ओवरऑल ओवरहेड्स वर वैल्यूड एट 40,000, but only 50% of the total overheads were allocated to this concerned job. So for job for which I am trying to find out the I'm trying to find out the value cost per unit, उस जॉब में ओवरहेड्स का सिर्फ 50% कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो 50% ऑफ 40,000 इज 20,000. Pretty simple. I add this up, this becomes 1 lakh. Right? So मैंने 1 लाख रुपया खर्च करके कितनी यूनिट्स बनाई? 100 यूनिट्स बनाई. So cost per unit would be 1 lakh divided by 100. It means my answer would be option number C. Right? So I can see Abhinay, Devanshu, Prabhu, Nilesh, Praneet. Very good guys, very good. ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे सिंपल था, but anyways, after every 10 questions I'll ask your score, so keep counting your score. You can add 1 mark for this question if your this question is correct. ठीक है, very good Himanshu. Let me move on to the next question. Question number 2. In the field of costing, which type of cost are categorized on behavioral basis? Question is easy, but many a times we don't know in theory that when we say costs are categorized on behavioral basis, what does it mean? So this question can be confusing for many people. Though once I'll explain, they will know the answer. So please answer this question. This is not a very tough question. I can see a lot of you are already answering this. See, costs are of various types, or they are categorized on various bases. So cost, if I categorize on the basis of behavioral, cost if I categorize on the basis of behavior, they can be categorized into total they can be categorized into various bases, but when cost is categorized onto behavioral basis, that is basically called cost behavioral analysis. कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस हमें यही सिखाता है कि भैया कैसे हमारा कॉस्ट अलग अलग सर्कमस्टांसेस में चेंज हो रहा है. तो जैसे एक सर्कमस्टांस होता है कि जैसे जैसे मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, मेरी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, वो कॉस्ट क्यों इंक्रीज होती है? जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ अ फैक्टर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो कॉस्ट मेरी हर यूनिट में अलग से लगती है, फिक्स कॉस्ट नहीं. मैंने प्लांट सेटअप कर लिया, फिक्स कॉस्ट है. अब मुझे हर यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वो वेरिएबल कॉस्ट है. तो कॉस्ट विच इज कैटेगराइज्ड ऑन बिहेवियरल बेसिस, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी.
ठीक है जी, वेरी गुड एवरीवन, अगेन नीलेश, अभिनय, हिमांशु, परनीत, वेरी गुड गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग? वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो 1 मार्क फ्री के हैं। कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट रिपोर्ट्स, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स प्लानिंग या कॉस्ट कंट्रोल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट से रिलेटेड है, कॉस्ट को ढूंढो, कॉस्टिंग के ऊपर रिपोर्ट्स बनाओ कि कहाँ ज्यादा कॉस्ट लग रही है, कहाँ कम कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट का ऑडिट करो। बट टैक्स प्लानिंग इसका पार्ट नहीं है, कॉस्ट कंट्रोल भी कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। तो इसका आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टैक्स प्लानिंग। तो आई होप काफी लोगों के 3/3 नंबर आ चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है जी, ये देखते हैं कौन करता है। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स। आपको सेल्स निकालनी है, दिया क्या हुआ है, प्रोजेक्टेड सेल्स निकालनी है, एग्जिस्टिंग सेल्स, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट जो एग्जिस्टिंग है। बट नेक्स्ट ईयर वो बोल रहे हैं जी कंपनी लॉस में जाएगी, कितना, 60,000। तो नेक्स्ट ईयर की मुझे प्रोजेक्टेड सेल निकालनी है कि किस प्रोजेक्टेड सेल के बेस पे वो लॉस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लॉस प्रिडिक्ट कर रहे हैं। कॉस्ट रिडक्शन इन स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बिल्कुल जी, कॉस्ट अकाउंटिंग में यही तो ढूंढते हैं कि कॉस्ट कहां पे हमारी ज्यादा लग रही है, कहां हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, तो कॉस्ट रिडक्शन भी आएगा। अभिनय ने आंसर दिया ई, अभिनय गलत है। आप रट्टा लगा के आए हो शायद कुछ प्रीवियस ईयर का, गलत आंसर है अभिनय। आई डेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थोड़े मैचिंग क्वेश्चन है बट अलग हैं, ठीक है, रट्टा मत लगाओ। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें पीवी रेशो निकालनी चाहिए। पीवी रेशो इज कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन क्या होती है जी, कंट्रीब्यूशन होती है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पे हमें वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं दी हुई, हमें तो फिक्स कॉस्ट दी हुई है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जी। प्रॉफिट क्या होता है जी, प्रॉफिट होता है जी जितनी मैंने सेल की, फिर जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट आई और मेरी वेरिएबल कॉस्ट आई, मैं दोनों माइनस कर दूंगा सेल से, तो मेरा प्रॉफिट निकल आएगा। यही होता है ना प्रॉफिट, कि मैंने कितना बेचा, उस बेचने वाले सामान के लिए क्या मैंने फिक्स कॉस्ट की, क्या मैंने वेरिएबल कॉस्ट की। तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट को इधर ले जाऊं जी, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है दिस इज ऑल्सो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट बाय सेल्स। ठीक है जी, अब प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है, मुझे फिक्स कॉस्ट दी हुई है, प्रॉफिट मेरा कितना है, ये प्रॉफिट मेरा कितना है 90,000। फिक्स कॉस्ट मुझे कितनी दी है, सॉरी प्रॉफिट मेरा 60 है, फिक्स कॉस्ट 90 है, तो दोनों को प्लस करेंगे। और सेल्स मेरी कितनी दी है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स है ना जी, कंट्रीब्यूशन तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट होगी। सेल्स मेरी दी हुई है 3 लाख, तो ये 90,000 प्लस 60,000 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, मतलब पीवी रेशो मेरी 1/2, मतलब पीवी रेशो मेरी 50% आ गई जी, 50%। ठीक है जी, अब पीवी रेशो मुझे पता है 50% है, और मुझे नेक्स्ट ईयर का अब निकालना है कि सेल्स क्या होगी। तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स नेक्स्ट ईयर पीवी रेशो 50% है जी। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालूंगा, मुझे नेक्स्ट ईयर का लॉस दिया हुआ है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी जी, तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट कितना है 60,000, ये लॉस है एक्चुअली, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, लॉस है ये, तो माइनस आ जाएगा, प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है 90,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल मुझे निकालनी है, तो सेल क्या हो जाएगी, सेल इज इक्वल टू -60,000 प्लस 90,000 मतलब 30,000 बाय सेल्स बाय 50, ये पीवी रेशो 50%। ठीक है, 50% मतलब 1/2, 30 × 2, आंसर आ गया 60,000। क्लियर है जी, क्लियर है जी ये।
ठीक है, जिसका आंसर सी है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। लर्नर, नीलेश, हिमांशु, परनीत, अभिनय, आप रट्टा लगा के आए हो बेटा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो ये आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। टीपीएम started as a method of physical asset management focused on maintaining and improving manufacturing machinery in order to reduce the operating cost. In the same regard, which of the following is main objective of TPM? या टीपीएम बहुत आसान है। टीपीएम का क्या ऑब्जेक्टिव है कि मेरी मशीन खराब नहीं होनी चाहिए, हमेशा चलती रहनी चाहिए, उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए, तो जीरो ब्रेकडाउन। ठीक है, फिर जब मेरी मशीन चल रही है तो अब ऐसा नहीं है कि मशीन गलत चल रही है, मशीन चल रही है तो सही चलनी चाहिए, जीरो डिफेक्ट होने चाहिए। और क्योंकि मशीन चलते चलते अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तब भी मशीन रोकनी पड़ेगी, तो जीरो एक्सीडेंट होने चाहिए। तो जीरो ब्रेकडाउन, जीरो डिफेक्ट, जीरो एक्सीडेंट, प्रॉपर मेंटेनेंस, यही एक टीपीएम का ऑब्जेक्टिव है। तो आंसर क्या होगा जी इसमें? ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी है। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कबान? कबान में क्या होता है? कबान में यही होता है यार, कार्ड में हम बता देते हैं कि कौन सी चीज हमारी खत्म हो गई है, कौन सी हमें और चाहिए, ताकि जस्ट इन टाइम डिलीवरी हो जाए। उससे पूरा स्टेटस ट्रैक हो जाता है कि कौन सी चीज हमें चाहिए, वो आ गई है या नहीं आ गई है। अगर आ गई है तो मतलब वो चीज पूरी हो गई है, नहीं आई है तो कब तक पूरी होगी। ठीक है, तो कबान इज काइंड ऑफ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो हमें बताता है कि हमारे क्या क्या टास्क है, उनका क्या स्टेटस है, टू डू में जो चीज थी वो कब डन होगी या हो गई है। नंबर ऑफ कबान कार्ड्स हैव इंक्रीज ओवर टाइम, ये गलत है भैया। नंबर ऑफ कबान कार्ड्स इन प्रोग्रेस बेसिकली आएगा इंक्रीजेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये स्टेटमेंट थोड़ी गलत है, इंक्रीजेज नहीं। कबान कार्ड्स ऐसे इंक्रीज नहीं होते हैं, क्योंकि अगर टास्क सही से मैनेज किए जा रहे हैं, दे वुड बी क्लोज्ड एज सून एज द कबान कार्ड इज रेज्ड फॉर सम रिक्वेस्ट। सो दे डोंट इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, they are maintained at a particular number if everything is working fine. तो इसका आंसर सी होगा, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कबान कार्ड रिड्यूस द नीड फॉर एक्चुअल मीटिंग्स, बिल्कुल सही है, बिकॉज एवरीथिंग कैन बी ट्रैक थ्रू कबान कार्ड, देर इज रिडक्शन इन द meetings that are supposed to be held. So answer is option number C. चलिए 7th, in an organization total units produced in an organization is 16,000 and 22,000 units respectively. The total cost increased from 22 lakh to 28 lakh. You are required to calculate per unit variable cost. ठीक है जी, इसका बड़ा ही सीधा फॉर्मूला है, मैं डिराइव तो नहीं करूंगा, कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे आप। ठीक है, इंक्रीज इन कॉस्ट बाय इंक्रीज इन सेल्स, क्योंकि उससे पता लग जाएगा ना कि अगर जैसे मैंने 10 यूनिट बनाई 20 रुपए में, 11 यूनिट बनाई 22 रुपए में, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए 2 एक्स्ट्रा रुपए लगे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए होगी। यही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। कॉस्ट कितना इंक्रीज हुआ? 28 लाख फ्रॉम 22 लाख, सो कॉस्ट इंक्रीज दिस 6 लाख। सेल्स कितनी बढ़ी? 22,000 फ्रॉम 16,000, सो 6,000 मेरी सेल्स बढ़ी जी। तो 100 यूनिट, 100 पर यूनिट इज द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये एग्जांपल से अच्छे से समझ आ गया होगा। सो मेरा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आएगा जी। 7th का आंसर किसी ने नहीं दिया अभी? मुश्किल था ये क्या ये क्वेश्चन?
चलो नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पता है जी क्या होती है? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी होती है कि क्या क्वांटिटी है जो हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए विच इज ऑप्टिमम फॉर मी फॉर माय कॉस्टिंग, कि जिससे मेरी कॉस्टिंग सबसे ज्यादा कम होगी। गाइस आई एम नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स, आप आंसर नहीं कर रहे हो, क्या हो गया है? हाँ जी, अब मैं देख पा रहा हूं। तो क्या ऑप्टिमम लेवल है जहां पे मेरी कॉस्टिंग मुझे मिनिमम पड़ेगी? उसमें दो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एक होता है मशीन सेटअप कॉस्ट और दूसरा होता है इन्वेंट्री कॉस्ट। अब मैं एक बार में कितनी क्वांटिटी बनाऊं, ये क्वेश्चन है। अगर मैं बहुत ज्यादा बना देता हूं, ठीक है, अगर मैं बहुत ज्यादा बना देता हूं तो क्या होगा कि मेरे पास इन्वेंट्री बहुत इकट्ठी हो जाएगी, मैं उसको एकदम तो बेच नहीं पाऊंगा, तो मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट पड़ने लग जाएगी। अगर मैं बहुत कम बनाता हूं तो क्या होगा कि मुझे बार बार मशीन को सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मल्टीपल बैचेस बनाने पड़ेंगे छोटी 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 क्वांटिटी की, तो मेरी मशीन सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक फॉर्मूला है जिससे मुझे ऑप्टिमम कॉस्ट पता लगती है कि मेरी टोटल कॉस्ट मशीन सेटअप प्लस इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो वो फॉर्मूला होता है जी अंडर रूट ऑफ 2AS/C। ए होती है एनुअल डिमांड, आपको एनुअल डिमांड दे रखी है 5000 प्रोडक्ट्स। एस होता है मेरा सेटअप कॉस्ट, वो मुझे 1000 रुपये दे रखी है, और कैरिंग कॉस्ट होती है कि इन्वेंट्री को रखने के लिए पर यूनिट 10 रुपये लगेंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अंडर रूट 2 इंटू ए मेरा हो गया डिमांड 5000 एनुअल डिमांड, एस हो गया मेरा जी सेटअप कॉस्ट 1000, और कैरिंग कॉस्ट मेरा सी कैरिंग कॉस्ट हो गया मेरा 10 रुपये। तो 5 2 10, ये कट गया, 6 जीरोज हैं जी मेरे पास रूट के अंदर, तो रूट से बाहर निकालूंगा, आंसर आ जाएगा 1000। सो अगर मैं 1000 यूनिट्स बनाऊंगा, आंसर बी, तो मुझे ऑप्टिमम कॉस्ट पड़ेगी जी। ठीक है, इसी का ये एक्सप्लेनेशन है। चलिए 9th क्वेश्चन बहुत आसान है। 9th क्वेश्चन तो मैंने फेज 1 के मैराथन में भी कराया था, सिमिलर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी आया था शायद। $800 units were introduced into the process. 10% is the normal loss. 600 units were transferred to next process. तो 800 units were introduced. नॉर्मल लॉस कितना है? 10%, मतलब 800 यूनिट्स 10% ऑफ 8000, 800 यूनिट्स आर नॉर्मल लॉस, मतलब मैं प्रोडक्शन कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? 7200। इस 7200 में से 6000 यूनिट्स तो पूरी हो गई हैं एक तरह से, ठीक है, और 1200 यूनिट्स आर वर्क इन प्रोग्रेस। 1200 यूनिट्स इज अ वर्क इन प्रोग्रेस जो कि 50% कंप्लीट हुई है, तो मैं इसको कितना कंप्लीट मानूंगा? 50% ऑफ दिस, मतलब 600। तो फाइंड द इक्विवेलेंट यूनिट्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड। 6000 तो पूरी बन गई, और ये 600 आधी बन, मतलब 1200 आधी बन गई है, मैं 600 पूरी ले लूंगा, तो 600 प्लस 6000 हो गया जी 6600, यानी कि आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड एवरीवन। कांची, नीलेश, हिमांशु, परनीत, वेरी गुड गाइस। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। In a managerial decision making, which of the following best describes the relationship between sunk cost and irrelevant cost? संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट होती है जो मैंने, मतलब किसी चीज पे लगाई, अब मुझे फायदा नहीं हुआ। संक कॉस्ट क्या होती है? जो मैंने किसी चीज पे लगा दी, मुझे फायदा नहीं हुआ, मेरी डूब गई, ठीक है, मैंने 10 मशीन्स ली 10 लाख रुपए की, लेकिन जो प्रोडक्ट वो बनाना था वो प्रोडक्ट ही अब मार्केट में बिकना बंद हो गया, तो ये मेरी संक कॉस्ट है। इररिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? इररिलेवेंट होती है कि जिसके बारे में आपको सोचना ना पड़े,
ठीक है। अब एक सिंपल एग्जांपल है, तो कंपनी बोलती है जी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन एम्प्लॉयज़ को रखेंगे। अब कोई बंदा आके बोलता है कि सर नहीं सर, वीमेन एम्प्लॉयज़ को रखोगे तो हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय डाउन आ जाए, इसलिए हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। पर फाउंडर बोलता है कि नहीं भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरे लिए इरेलीवेंट है बिकॉज आई वांट टू वर्क फॉर विमेन एम्पावरमेंट। मेरे लिए प्रॉफिट या कॉस्ट इरेलीवेंट है, लेकिन मुझे अपना ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, तो उसके लिए कॉस्ट इरेलीवेंट हो जाएगी। हर बंदे के लिए कुछ एक एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। या फिर मैं 2 प्रोजेक्ट लगा रहा हूं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट मुझे पंजाब में लगाना है, एक हरियाणा में लगाना है, और मेरा एनालिसिस बोलता है कि दोनों जगह कॉस्ट सेम ही आएगी, तो अगेन ये कॉस्ट मेरे लिए इरेलीवेंट होगी। मैं इसके बेस पे नहीं डिसाइड करूंगा कि मुझे प्रोजेक्ट पंजाब में लगाना है या हरियाणा में लगाना है। तो इरेलीवेंट कॉस्ट होती है जिसको आपको सोचना ना पड़े, वो आपके डिसीजन में इरेलीवेंट होगी। संक कॉस्ट होती है जो बेकार होगी, है ना। तो संक कॉस्ट भी एक तरह से इरेलीवेंट कॉस्ट है। अब संक कॉस्ट है, बेकार ही हो चुकी है, मैं उसके बारे में क्यों ही सोचूंगा, अपना दिमाग खराब करूंगा, मेरे लिए वो इरेलीवेंट है, वो मैं कर चुका हूं, अब उसका कोई फायदा नहीं है। बट क्या ऑल इरेलीवेंट कॉस्ट आर संक कॉस्ट? ऑल संक कॉस्ट आर इरेलीवेंट कॉस्ट। बट कोई भी कॉस्ट अगर इरेलीवेंट है, क्या वो संक कॉस्ट है? नहीं ना। अगर मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा हूं, मेरे लिए वो बड़ा ऑब्जेक्टिव है, तो मेरे लिए वो इरेलीवेंट कॉस्ट है। बट क्या वो संक कॉस्ट है? नहीं, वो बेकार तो नहीं हुई है ना, उससे विमेन एम्पावरमेंट तो हो रही है ना। तो ऑल संक कॉस्ट आर इरेलीवेंट कॉस्ट बट नॉट ऑल इरेलीवेंट कॉस्ट आर संक कॉस्ट। इसका आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे नीलेश, हिमांशु, श्रीमद, कांची, वेरी गुड गाइस। चलो 11th क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू CS7 स्टैंडर्ड ऑन एम्प्लॉय कॉस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 किस चीज पे होता है जी? एम्प्लॉय कॉस्ट पे होता है। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय कॉस्ट में किस चीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है? देखिए, CS7 बोलता है कि एम्प्लॉय कॉस्ट में अगर एम्प्लॉय का कोई आइडियल टाइम है उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। हमने कोई डैमेज भरा है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, एम्प्लॉय से कुछ गलत काम हो गया, हमें उसकी पेनल्टी देनी पड़ी, डैमेज भरना पड़ा, वो नहीं इंक्लूड किया जाएगा जी। एम्प्लॉय की कोई रिक्रूटमेंट कॉस्ट है जी, वो नहीं इंक्लूड की जाएगी जी। तो ये सारी कॉस्ट हैं जो नहीं इंक्लूड की जाती एम्प्लॉय कॉस्ट में एज पर CS7। तो अगर आप इन ऑप्शंस में से देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बनता है। बोनस इंक्लूड किया जाता है जी, ठीक है, ये इंक्लूड किया जाता है। अगर आप कोई अलाउंसेस और बेनिफिट्स दे रहे हो, कोई घर दे रहे हो, गाड़ी दे रहे हो फ्री में, वो भी इंक्लूड की जाती है, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट पे आप कोई पैसा दे रहे हो जी, वो भी इंक्लूड की जाती है। और कोई परक्विजिट दे रहे हो, फ्री फूड दे रहे हो, फ्री कैब दे रहे हो, वो भी इंक्लूड की जाती है। आइडल टाइम अगर एम्प्लॉय बैठा है और आप सोचो कि यार इसकी भी मैं कॉस्ट लगा लूं क्योंकि ये तो मेरा टाइम बर्बाद हो गया, वो नहीं इंक्लूड किया जाता जी। ये बताओ जी, ये तो मैंने अभी समझाया था जब मैंने √2as/c का फॉर्मूला समझाया था। बैच प्रोडक्शन में 2 कॉस्ट होती है, ये मशीन को सेटअप करने की और इन्वेंट्री को होल्ड करने की। इसके बेस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी है। तो इसका आंसर तो ए एंड बी है जी, बोथ। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलो 13th क्वेश्चन करते हैं जी। 2 कंजेक्टिव मंथ की जो सेल है कंपनी की वो 5 लाख और 6 लाख है रिस्पेक्टिवली, और जो नेट प्रॉफिट्स हैं इन 2 महीनों में वो है 30,000 और 60,000, ठीक है। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है जी, दिया हुआ है क्लियरली। तो कंपनी की कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रेशो क्या है? फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, तो वी कैन इजीली एज्यूम दैट कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स जो हमारा है क्या होगा जी? वो चेंज इन प्रॉफिट्स
मतलब डेल्टा प्रॉफिट लगा लो बाय डेल्टा सेल। अब ये फॉर्मूला नहीं पता है तो पता होना चाहिए था इस टाइम, तो फिर आपको समझाना इतना डिटेल में मुश्किल हो जाएगा। 30,000 बाय ये चेंज इन सेल कितने जी, 1 लाख। 3/10 होगा जी इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आता था ये। 13th का ए नहीं होगा जी, उल्टा कर गए जी आप। श्रिष्मा आप उल्टा कर गए हैं बेटा, डेल्टा सेल बाय डेल्टा प्रॉफिट नहीं होता, डेल्टा प्रॉफिट बाय डेल्टा सेल होता है। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रेशो, सेल तो है ही नीचे, आप देखो कंट्रीब्यूशन ऊपर है, सेल्स नीचे है, तो सेल तो नीचे ही आएगा ना। कंट्रीब्यूशन निकालनी है, कंट्रीब्यूशन का वैसे फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बट अगर हमें डेल्टा प्रॉफिट पता है और कोई फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। चलिए 14th क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन रिपीट किया, आपके फेज 1 मैराथन में भी मैंने कराया था। सेल्स हमारी 9 लाख है जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, पीवी रेशियो 2/3 है, व्हाट इज द ब्रेक इवन सेल्स। बहुत आसान है जी, ब्रेक इवन सेल्स क्या होती है, सेल्स अबव मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल्स क्या है मेरी 9 लाख, माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40% ऑफ व्हाट, 40% ऑफ 9 लाख, मतलब 9 लाख माइनस 40% ऑफ 9 लाख इज 3 लाख 60,000, सो माई आंसर वुड बी 5 लाख 40,000 इज माई ब्रेक इवन सेल्स। मतलब इस पॉइंट पे मेरी ब्रेक इवन सेल्स होगी, ना मेरा प्रॉफिट होगा ना मेरा लॉस होगा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है कि ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर मैं कितनी और सेल्स कर रहा हूं, जो मेरे पास एक सेफ्टी मार्जिन है, ये मेरा सेफ्टी मार्जिन है ना, क्योंकि अगर मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होती है तो अल्टीमेटली मैं ब्रेक इवन सेल्स पे पहुंच जाऊंगा एक दिन, और वहां से मेरा लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है जी। चलो क्वेश्चन 15 करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वुड बी ओवर अप्लाइड इफ, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वुड बी ओवर अप्लाइड इफ। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो हमने कंपनी में ऑयल खरीदा 1 लाख रुपए का, और एक मशीन है जो, सपोज कर लो, एग्जांपल ले रहा हूं, बड़ा गंदा एग्जांपल है बट समझाने के लिए सही है, पीनट्स निकाल रही है कुछ प्रोसेसिंग करके, और एक मशीन है जो आप लगा लो यार कुछ बहुत बड़ा कुछ टायर मैन्युफैक्चर कर रही है। अब हमने 20 यूनिट्स पीनट के बनाए, मतलब 20 दाने पीनट के बनाए और 20 हमने टायर बनाए। अब कोई कह सकता है कि जी हमने जी टोटल 40 यूनिट बनाई, ये 40 यूनिट में मेरा 1 लाख का तेल लग गया, तो मैं एक यूनिट के लिए 1 लाख बाय 40 ऐसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा 2500 रुपया पर यूनिट लग गया। ठीक है, ऐसा कोई बोल सकता है। और फिर बोलेगा जी मूंगफली के यूनिट बनाने में जो ओवरहेड है, जो ऑयल का कॉस्ट है, ये ओवरहेड है ना, वो मैं 50,000 मानूंगा, क्योंकि 2500 पर यूनिट है, 20 यूनिट है, मैं 50,000 मानूंगा। ये तो गलत हो जाएगा ना, जिस बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे हो वो गलत है। एक जगह आप टायर बना रहे हो, कितना ऑयल यूज हो रहा है, पीनट्स बनाने में शायद आपने 2% ऑयल यूज किया हो, तो अगर मैं पीनट्स को 50,000 ओवरहेड दे दूं तो मैंने ओवरहेड ज्यादा अप्लाई कर दिया, इसी को मैं बोलता हूं ओवर अप्लाइड ओवरहेड। तो मैन्युफैक्चरिंग में ओवरहेड ओवर अप्लाइड कब होता है, जब जो मैंने अप्लाई किया है वो एक्चुअल से ज्यादा है।
एक्चुअल कम होगा शायद, 50,000 नहीं 10,000 होगा, 15,000 होगा, पर मैंने 50,000 कर दिए। तो व्हेन अप्लाइड ओवरहेड इज ग्रेटर देन एक्चुअल ओवरहेड, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कि ओवरहेड हैज बीन ओवर अप्लाइड। क्लियर है? एग्जाम्पल से क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आसान है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5S मेथोडोलॉजी व्हाट डज सस्टेन मीन? मैंने सारे 5S लिख दिए हैं आपको आसान करने के लिए। सस्टेन का क्या मतलब होता है जी? देखिए, जो 5S होते हैं, सॉर्ट होते हैं कि आप चीज़ों को सॉर्ट कर लो, जो चीज़ बेकार की है उसको बाहर फेंक दो, फिर उनको एक ऑर्डर में रख लो, हर चीज़ के लिए एक डेजिग्नेटेड स्पेस लगा लो कि जहाँ पे उसको रखना है, ताकि बाद में वो अच्छे से मिल सके, जल्दी से मिल सके, उसको ढूंढना ना पड़े। क्लीन करो, कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करो, प्रोसेसेस बनाओ। सस्टेन मतलब एम्प्लॉयज़ में डिसिप्लिन लाओ, ताकि वो फिर प्रोसेसेस को फॉलो करें, जो भी हैबिट्स हमने उनमें डाली हैं उनको फॉलो करें। तो मेंटेनिंग सेल्फ डिसिप्लिन एंड एडहेरेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज इज ऑल अबाउट सस्टेनिंग, जिसको हम शित्सुके भी बोलते हैं। ठीक है, ये जापानीज में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, मैं इसको शित्सुके ही बोलता हूँ। सीरी सीटन सीसो सिकेत्सु शित्सुके, रट्टा लगा लेना इसको। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। गाइस, सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैट विंडो में ऑसम कमेंट कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा तो डिसलाइक कर दीजिए। आप तो भगवान है, आप ही डिसाइड करेंगे कि सेशन अच्छा है या नहीं है। अ कंपनी हैज टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। पीवी रेशियो ऑफ एक्स इज 40%, वाई इज 30%. कंपनी हैज अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज सेल्स बाय 1 लाख ऑफ द आइदर प्रोडक्ट। उनको क्या करना चाहिए? दोनों प्रोडक्ट्स का पीवी रेशियो दिया है और दोनों प्रोडक्ट्स की सेल वो 1 लाख से इंक्रीज कर सकते हैं। कंपनी को कहां ज्यादा फायदा होगा, बताओ जी। गाइस, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो चैट विंडो में ऑसम जरूर टाइप कर दीजिए, ऑसम। पीवी रेशियो क्या होती है भाई? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। ठीक है, अब पीवी रेशियो क्या है? एक की 40 है, एक की 30 है। सेल्स दोनों में 1 लाख रुपया बढ़ेगी। कंट्रीब्यूशन क्या होती है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहूंगा, अगर मेरी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू बढ़ेगा मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। मैं कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहूंगा, हायर कंट्रीब्यूशन इज बेनिफिशियल फॉर मी। तो एक्स के केस में पीवी रेशियो 40 है, वाई के केस में 30 है। दोनों के केस में ये सेल जो इंक्रीज है वो लाख है। तो जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो कहां ज्यादा बढ़ रही है? सेल तो बराबर है, कंट्रीब्यूशन क्या होगा? पीवी इंटू सेल, दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, पीवी इधर 40 है, इधर 30 है, एक में 40 इंटू 1 लाख होगा, एक में 30 इंटू 1 लाख होगा। तो कहां मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है? मुझे कंट्रीब्यूशन बढ़ानी थी, मुझे ज्यादा फायदा क्या हो रहा है? एक्स के केस में, एक्स के केस में हो रहा है। तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स वुड बी दिस, वाई वुड बी दिस, एक्स इज प्रेफरेबल, बिल्कुल सही है। दूसरे में क्या है? वाई प्रेफरेबल, गलत है। मुझे तो कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए फायदा करता है। ठीक है, ये भी गलत है। वाई इज प्रेफरेबल, बोथ आर इक्वली प्रेफरेबल। यहां पे भी एक्स इज प्रेफरेबल है, बट कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स विल इंक्रीज बाय 5 लाख, नहीं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स विल इंक्रीज बाय 4 लाख। ये 40% है ना, इसलिए 4 लाख से इंक्रीज होगी। चलो, नेक्स्ट बताओ जी। कैंटीन कॉस्टिंग और हॉस्टल कॉस्टिंग में क्या फर्क है जी?
कैंटीन कॉस्टिंग क्या होती है? कैंटीन में हम जो लोग हॉस्टल में रहे हैं यार, होता है ना कि मेस में बिल आता है तो टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय मील्स कर लेते हैं, तो कॉस्ट पर मील निकालते हैं हम कैंटीन में। होटल में क्या निकालते हैं हम? होटल में जो कॉस्टिंग होती है जनरली यूनिट होती है कि मुझे कॉस्ट पर पर रूम डे कि एक दिन के लिए मुझे रूम की क्या कॉस्ट पड़ती है, इस तरह से कॉस्टिंग होती है, या पर बेड पर डे हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले में क्या है, बोथ यूज कॉस्ट पर मील, ये गलत है। कैंटीन यूजेस कॉस्ट पर मील, होटल यूजेस कॉस्ट पर रूम पर डे, ये सही है। ठीक है, कैंटीन बैंक्वेट हॉल चार्जेस, ये तो गलत है। कैंटीन में बैंक्वेट हॉल कहाँ से आ गया? बोथ यूजेस कॉस्ट पर रूम पर डे नहीं। बेसिकली क्वेश्चन इज ऑन द यूनिट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19th क्वेश्चन करते हैं। इन अ डिपार्टमेंट टोटल ओवरहेड्स आर 60,000 और डिपार्टमेंट के पास जो मशीन आवर्स हैं वो 12,000 हैं और मशीन आवर्स के बेसिस पे ही ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब किसी जॉब में अगर 450 मशीन आवर्स यूज हो रहे हैं तो ओवरहेड कितना उसमें एब्जॉर्ब किया जाएगा? बहुत आसान है। टोटल ओवरहेड कितने हैं जी? 60,000 और इसको किस बेसिस पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है? मशीन आवर्स पे। टोटल मशीन आवर मेरे कितने लगे इस ओवरहेड के लिए? 12,000। तो एक मशीन आर का जो ओवरहेड है मैं 5 रुपीज मानूंगा। अब किसी जॉब ने 450 मशीन आवर्स यूज कर लिए, 5 रुपए ओवरहेड मैं मानूंगा पर मशीन आर। ठीक है, तो टोटल ओवरहेड इसमें कितना हो गया जी? 2250 हो गया। आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताओ, ये तो आसान है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। हमें डायरेक्ट कॉस्ट दे रखी है, ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले आपको पता है वर्क्स कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट क्या होती है? और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? प्राइम कॉस्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। ठीक है, इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, नहीं तो इसमें एक और पैरामीटर भी होता है, उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे। तो मेरी प्राइम कॉस्ट इसमें कितनी होगी? 13,000। प्राइम कॉस्ट मेरी कितनी होगी? 13,000। वर्क्स कॉस्ट होती है प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड। तो प्राइम कॉस्ट मेरी 13,000 है, वर्क्स ओवरहेड मेरा 4,000 है, तो वर्क्स कॉस्ट मेरी होगी 17,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है जी? वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये मेरी 17,000 है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मेरा 2,000 है, तो 17,000 प्लस 2,000 इट विल बी 19,000। सो आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। तो एग्जाम में अगर प्राइम कॉस्ट पूछ ली जाए, वर्क्स कॉस्ट पूछ ली जाए, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं जी। ये कंपनी 1500 यूनिट्स बनाती है और ये इसकी कॉस्टिंग है। अब कंपनी इसको बेचकर 20% प्रॉफिट कमाना चाहती है ऑन सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस ढूंढना है जी, हमें सेलिंग प्राइस ढूंढना है। आसान है जी, सबसे पहले तो कॉस्ट निकाल लो। टोटल कॉस्ट कितनी है जी इसकी? 90,000 प्लस 45,000 1,35,000 प्लस 30,000 1,65,000 प्लस 15,000 1,80,000। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट आ गई वो 1,80,000 आ गई। और मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? मैंने 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। सो कॉस्ट पर यूनिट मेरी आ जाएगी जी 120 रुपए। ठीक है, 120 रुपए मेरी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब मैं सेलिंग प्राइस पे 20% बनाना चाहता हूं। इसमें नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं, 20% देख के इस पे 20% ऐड कर देते हैं। 120 में 20% ऐड किया तो प्लस 24 किया इक्वल टू 144। लकीली आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर 144 होता तो वो टिक कर देते हैं जी, ये गलत है। प्रॉफिट जो 20% है वो सेलिंग प्राइस पे है, तो मैं सेलिंग प्राइस कितना लूंगा? x, मतलब x माइनस माई कॉस्ट डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू
20%, यही हुआ ना। अगर x मेरा सेलिंग प्राइस है, उसमें से कॉस्ट प्राइस निकाल के, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है सेलिंग प्राइस की, मैं x से डिवाइड करूंगा इक्वल टू 20%, तो ये बन गया x माइनस 120 इक्वल टू 0.2x, 20% इज 0.2। ठीक है, ये इधर आ गया जी, मतलब 0.8x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 0.8, ये 150 आ गया जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया जी। सेलिंग प्राइस 150 होना चाहिए। ठीक है जी, परनीत ने 144 बताया, वही गलती की है जो मैं आपको बता रहा था। 20% प्रॉफिट ऑन दी कॉस्ट प्राइस नहीं है जी, ऑन दी सेलिंग प्राइस है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। In unit costing, how is the cost of materials for production determined and used? Materials are issued randomly, ये तो नहीं हो सकता। Cost of materials issued are collected from material requisition notes, accumulated for the period and posted in cost accounting system to prepare cost sheet। ये बिल्कुल सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। Materials are charged directly to profit and loss account, गलत है जी। Only the cost of purchase material is considered, issued materials are ignored, ये भी गलत है। ठीक है, अगर मैंने सपोज 1 लाख की परचेज कर ली, लेकिन प्रोडक्शन में मेरा सिर्फ 20,000 का माल यूज हुआ, तो ऐसा थोड़ी है मैं 1 लाख रुपया मान लूंगा कि मेरा यूज हुआ है, तो डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत है जी, नॉट ऑन एक्चुअल यूसेज तो पॉइंट में आएगी। तो हमारे मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स होते हैं जी, ठीक है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया है और हमने कैसे कैसे उसको यूज़ किया है, उसके बेस पे हम यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जी। चलिए 23 बताओ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक्स इन कॉस्ट शीट? कि जब भी हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं, जनरली क्या होता है, हमारे पास कुछ ऑलरेडी, अगर मैं बोलूँ कि कुछ जैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पड़े हैं या फिर फिनिश गुड्स पड़ी हैं ऑलरेडी। ठीक है, फिर एंड में मेरे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो अगर फाइनली मतलब मेरे पास सपोज आज की डेट में 100 यूनिट्स रॉ मटेरियल यूज़ किया, ठीक है, और 10 मेरे पास पहले से पड़ा था, तो मैं यही बोलूँगा ना कि 10 मेरे पास पहले से पड़ा था, 100 मैंने और ले लिया और एंड में मेरा थोड़ा 20 बच गया, तो मैंने नेट कितना यूज़ किया? 100 प्लस 110 माइनस 20, 90। तो मैं ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देता हूं, क्योंकि वो मैं पहले से पीछे से लेके आ रहा हूं, और क्लोजिंग स्टॉक को मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जी इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स एन अनफेवरेबल लेबर रेट वेरिएंस? अनफेवरेबल लेबर रेट वेरिएंस तो दोनों साइड हो सकती है, कि जो स्टैंडर्ड रेट है आप उससे कम दे रहे हो वो भी वेरिएंस है, ज्यादा दे रहे हो वो भी वेरिएंस है। बट अनफेवरेबल क्या है? ये कंपनी के परस्पेक्टिव से पूछा जा रहा है कि कंपनी के लिए अनफेवरेबल लेबर वेरिएंस क्या है, लेबर रेट वेरिएंस। वो वही होगी ना जहां आप एक्चुअल वेज जो पे कर रहे हो वो स्टैंडर्ड से ज्यादा है।
आपने देने थे 11 रुपए घंटे, लेकिन आप दे रहे हो 12 रुपीज पर घंटे, तो कंपनी के लिए ये अनफेवरेबल सिनेरियो हो गया, वर्कर्स के लिए फेवरेबल है। तो क्वेश्चन ये कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉस्टिंग तो कंपनी करती है ना, वर्कर थोड़ी करते हैं। तो यहां पे आएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं नहीं, सी नहीं, सॉरी, ये बी आएगा, बी आएगा जी। ठीक है, मैं गलत देख गया। एक्चुअल वेज रेट पेड इज हायर, यही मैंने आपको यहां समझा, एक्चुअल वेज रेट इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड वेज रेट। बी है इसका आंसर। चलिए 25th करते हैं जी। अ कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीटेड 1 डोर एंड 1 विंडो सर्टिफाइड। आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्टर का कुछ काम सर्टिफाइड होता है, कुछ अनसर्टिफाइड होता है। तो एक डोर और एक दरवाज़ा उसने एक डोर और एक विंडो उसने सर्टिफाइड बना दी, और एक आधी डोर और बना दी अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड जो काम किया उसका 1500 बनता था, जिसमें से 1000 उसको दे दिया। हाउ शुड वर्क इन प्रोग्रेस, कैश रेशियो एंड रिटेंशन मनी बी ट्रीटेड, मतलब इनका क्या मतलब होगा, इनसे हम क्या डिड्यूस करेंगे। देखिए, जो वर्क सर्टिफाइड होता है ये वाला, इसको हम सेलिंग प्राइस पे, मतलब अगर उसने 1500 डिसाइड किए थे कि मैं लूंगा, तो सेलिंग प्राइस पे ही हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। जो ये वाला होता है अनसर्टिफाइड, ठीक है, आई होप आपको इनका मीनिंग पता है, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये होता है एट कॉस्ट, कि जितना आपको कॉस्ट पड़ा उसके बेस पे इसकी अकाउंटिंग होती है। कैश रेशो क्या होता है कि आपका जितना बनता था आपको उसमें से कितना मिल गया। इसका 1500 बनता था, इसको 1000 मिल गया, तो ये कैश रेशो से पता लगेगा कि 1000/15 मतलब 2/3 इसको मिल गया, ये मेरी कैश रेशो बन जाएगी। रिटेंशन मनी के कितना उसने रख लिया है, 1500 में से 1000 देके 500 उसने रख लिया, तो 500 रिटेंशन मनी हो गई। तो अगर आप सेकंड देखेंगे, वर्क सर्टिफाइड एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अनसर्टिफाइड एट कॉस्ट, बिल्कुल सही है। कैश रेशियो रिफ्लेक्ट्स पेमेंट मेड, बिल्कुल सही है। रिटेंशन मनी इज बैलेंस विद हेड, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आएगा जिसका। In simple average method, the price of materials is calculated by what method? Simple average method. Weighted average नहीं है, सिंपल एवरेज है कि मैंने एक यूनिट मटेरियल, पहले मैंने जैसे मुझे किसी प्रोसेस में केले यूज करने हैं कुछ शेक बनाने के लिए, पहला केला मैंने 10 रुपए का लिया, दूसरा केला मैंने 11 रुपए का लिया, तीसरा केला मैंने 12 रुपए का लिया, फिर मैंने 3 केले 13 रुपए के ले लिए। तो सिंपल एवरेज मेथड में मैं एवरेज कॉस्ट कैसे निकालूंगा, कुछ नहीं, ठीक है, कैसे निकालूंगा, डिवाइडिंग दी टोटल रेट्स बाय नंबर ऑफ रेट्स। अब यहां पे मैंने 3 लिया, 1 लिया, कुछ मैटर नहीं करता, मैं इनका सम कर दूंगा, 10 + 11 + 12 + 13, और नंबर ऑफ रेट्स कितने, 1 2 3 4। ये नहीं देख रहा कि हर रेट पे कितने यूनिट्स लिए हैं। जैसे 10 11 12 पे तो एक एक यूनिट लिया था, लेकिन 13 पे अगर मैं सपोज 100 यूनिट ले लूं, तो मेरा एवरेज कॉस्ट तो मतलब 13 के करीब आ गया ना, क्योंकि मैंने बहुत हाई परसेंटेज तो 13 पे ले लिया। बट सिंपल एवरेज मेथड क्या करता है, बस सारे रेट्स को प्लस करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेट्स, यूनिट्स को काउंट नहीं करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेटेड एवरेज में मैं करूंगा 10 × 1 + 11 × 1 + 12 × 1 + 13 × 100 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, तो 100 101 102 103, इस तरह से मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालूंगा। चलिए 27, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, ये तो मैंने अभी आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ये बताया था मैंने आपको, कहाँ बताया था, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। वर्क्स कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी,
वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, पहला ही ऑप्शन आ गया। प्राइम कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं, प्राइम कॉस्ट में पहले वर्क्स कॉस्ट ऐड होगी, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ऐड होगी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड होगा। ठीक है, तो ये सारे गलत हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको हम वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, इसको हम वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं, इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए जी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन कॉस्ट एलोकेशन एंड कॉस्ट अपोर्शनमेंट? देखो, एलोकेशन क्या होती है? जब आप कॉस्ट को बड़े आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मेरे दो डिपार्टमेंट्स हैं, D1 D2, यहां से मेरी पावर आई, मैंने 100 यूनिट्स पावर यूज की टोटल कंपनी ने दोनों डिपार्टमेंट्स में। अब यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, D1 का मीटर बोल रहा है कि जी 30 यूनिट्स इन्होंने यूज की, D2 का मीटर बोल रहा है कि जी 70 यूनिट इन्होंने यूज की। तो मैं आराम से 100 यूनिट्स की कॉस्ट को डिवाइड कर सकता हूँ 30% और 70% से D1 और D2 में। इसको बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट अपोर्शनमेंट होती है जब आप कुछ इनडायरेक्ट मेथड यूज करके कॉस्ट को असाइन करते हो। जैसे कि अब मैंने ऑयल यूज किया, कुछ 200 किलो ऑयल मैंने यूज कर लिया। अब मेरे पास कोई मीटर नहीं है, पावर का तो मीटर है, ऑयल का कोई मीटर नहीं है कि जी D1 ने कितना किया और D2 में कितना किया। तो मैं कुछ बेसिस पे देख लूंगा यार, या तो मैं बोल दूंगा अच्छा D1 का रेवेन्यू 1000 पे है, इसका 1 लाख है, तो इसके बेस रेवेन्यू के बेस पे डिवाइड कर दो। तो मैं कुछ बेसिस के ऊपर कुछ एक तरह से तुक्का लगाऊंगा। ठीक है, तुक्का नहीं मतलब कुछ बेस डिसाइड करूंगा जो मुझे लगता है सही है, बट डायरेक्टली मैं उसको नहीं डिवाइड कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो डायरेक्ट मेथड से होता है कॉस्ट एलोकेशन, इनडायरेक्ट मेथड से होता है कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे, एलोकेशन असाइंस कॉस्ट डायरेक्टली टू डिपार्टमेंट्स व्हाइल अपॉर्शनमेंट सेपरेट्स इनडायरेक्ट कॉस्ट बेस्ड ऑन सूटेबल बेसिस। वो बेसिस कोई भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे रेवेन्यू लेके समझाया, वो कुछ भी हो सकता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा जी। इन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट आउटपुट इज चार्ज टू नेट प्रोसेस एट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है? देखिए, आपकी कंपनी में बहुत सारे इंटर प्रोसेस होते हैं। जैसे प्रोसेस 1 है, वो क्या बना रहा है? वो एक सिंपल सी मेक बना रहा है। ठीक है, फिर वो प्रोसेस 2 में गया, उसने क्या किया जी, इस मेखों को जोड़ के कोई सर्किट बना दिया जैसे। फिर प्रोसेस 3 में गया, उन्होंने इन सर्किट्स को जोड़ के जी कोई एक बड़ी मशीन बना दी। तो बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को भेजता है, दूसरा प्रोसेस तीसरे प्रोसेस को भेजता है, तो इन प्रोसेसेस को भी कॉस्ट अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है कि मैंने इतने रुपए खर्चे और इतनी मेरी कॉस्ट आई, मैंने अपना मार्जिन लगा के इसको बेच दिया, ताकि हर डिपार्टमेंट अपना अपना प्रॉफिट दिखा सके। तो जब ये प्रोसेस इस प्रोसेस को बेचता है, ठीक है, तो उस प्राइस को कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। तो इन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट आउटपुट इज चार्ज टू नेक्स्ट प्रोसेस एज ट्रांसफर प्रॉफिट इंक्लूडिंग प्रॉफिट। अब इसका कोई प्रॉफिट होगा, जैसे मैंने बोला, इसको बनाने में लगे 100 रुपए, इसने ट्रांसफर प्राइस डिसाइड किया 101 रुपए, तो इसका 1 रुपए प्रॉफिट है। टू मेजर एफिशिएंसी, तो बेसिकली इन सबकी ट्रांसफर प्राइस और प्रॉफिट इसीलिए कैलकुलेट की जा रही है ताकि इनको भी मोटिवेशन मिले कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, ज्यादा से ज्यादा अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं, क्योंकि इनके अप्रेजल्स, इनकी सैलरीज उसी पे डिपेंड करती।
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने पहले करा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्क अनसर्टिफाइड इज करेक्ट। वर्क अनसर्टिफाइड में मैंने क्या बोला था, जो भी आपकी अकाउंटिंग होती है वो कॉस्ट पे होती है जी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे नहीं होती है। तो वर्क अनसर्टिफाइड इज वैल्यूड एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, गलत है। सर्टिफाइड वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे वैल्यू होता है। वर्क अनसर्टिफाइड इज वैल्यूड एट कॉस्ट एंड एक्सक्लूड्स प्रॉफिट, बिल्कुल सही है। आंसर इसका बी होगा। वर्क अनसर्टिफाइड इज इंक्लूडेड इन कैश पेड, तो बेकार ऑप्शन है। वर्क अनसर्टिफाइड रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, गलत है। वर्क अनसर्टिफाइड इज ट्रीटेड द सेम एज डिफेक्टिव वर्क, कोई रिलेशन ही नहीं है डिफेक्टिव वर्क से, तो आंसर इसका होगा जी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। अब ये एक बोनस क्वेश्चन में लाया था, इसका आप आंसर मुझे करके बताओ, कमेंट सेक्शन में आपको देने जी। ठीक है, जो जो लाइव देख रहे हैं वो चैट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा जी। ठीक है, ये आप ही को करना है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे बाद में वो इसका आंसर चैट बॉक्स में ज़रूर डालें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो अच्छी खासी आपकी तैयारी है। यूजर बाय द नेम लर्नर, आप इसका आंसर 6 रुपीज दे रहे हैं। चलो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, हालांकि अगली स्लाइड पे इसका आंसर है, बट मैं जल्दी से उसको खश करके निकाल दूंगा ताकि आपको आंसर ना पता चले। ये आंसर आपको निकालना है, खुद पता करना है क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, खुद पता करो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, 45,000 डिवाइडेड बाई 9,000 आप लिख रहे हैं ₹6। MR बोल रहे हैं इसको भी बता दीजिए। चलो बता देता हूँ भाई, ठीक है। देखो ये 50,000 यूनिट है, 50,000 रुपए हैं, मैं भी हिल गया हूँ थोड़ा सा। 10,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, तो बेसिकली 5,000 आपको 5 रुपए आपको पर यूनिट पड़ रहा है एक तरह से। बट अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1,000 यूनिट्स नॉर्मल लॉस में थे और उसको 5,000 पे वैल्यू किया जा रहा है। तो अगर मैं नॉर्मल लॉस को काउंट कर दूं तो काउंटिंग में क्या होता है कि जो नॉर्मल लॉस था, नॉर्मल लॉस है ये, बियॉन्ड नॉर्मल लॉस नहीं है। तो मैं जब अपनी कॉस्टिंग निकालता हूं तो मैं क्या बोलता हूं कि मैंने 9,000 यूनिट्स बनाए, 9,000 यूनिट्स बनाए, और 9,000 यूनिट्स बनाने में मेरा 1,000 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था, मतलब वर्थ 5,000 ऑफ मेरा पैसा बर्बाद हुआ जो होना था। तो मैं इसकी कॉस्ट यहाँ पे 45,000 ही लूंगा, 50,000 में से मैं 5,000 माइनस कर दूंगा। तो मेरे जो कॉस्ट पर यूनिट बुक्स में आएगी वो 5 रुपीज आएगी। आंसर ये आएगा इसको। हमें ये नहीं करना कि हमें 50,000 से 9 को डिवाइड नहीं करना, क्योंकि 1,000 यूनिट्स का कॉस्ट 5,000 है जो नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था, तो इसका जो कॉस्ट है मैं 50,000 में से माइनस करूंगा और फिर मेरी जो यूनिट्स बनी है उस पे मैं डिवाइड करूंगा टू गेट माई आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ₹5 आएगा। और ये 45,000 यूजर बाय दी लर्नर काफी आंसर सही दे रहे हैं, बट देखो एग्जाम में यही होता है, ये सेली मिस्टेक हम करके आते हैं। वो लिख रहे हैं कि 45,000 बाय 9,000 आंसर है, लेकिन आंसर क्या दे रहे हैं 6। ये सिली मिस्टेक कर कर आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, मैं बता रहा हूं। इतना कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, चलो थैंक यू गाइज। और हाँ, ये देख लो यार, अगर आप
कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लेने की सोच रहे हो PFRDA की, तो स्पेशली हमारा डिस्काउंट चल रहा है PFRDA पे 85% डिस्काउंट चल रहा है। यूज कोड फेस्टिवल 85 टू अवेल 85% डिस्काउंट। आप इस टाइम तो आप टेस्ट सीरीज ही लेने की सोच रहे होगे शायद, या फिर अगले साइकिल के लिए आप PFRDA का कोई कोर्स लेने की सोच रहे हो तो ले सकते हो, नहीं तो टेस्ट सीरीज आई थिंक इट हैज़ अराउंड मोर देन 5000 प्लस क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट पे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एवेल्युएशन भी होगी उसकी बाद में, ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। तो ये फेज़ 2 की जो टेस्ट सीरीज़ है ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। और बाकी आपके जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ में एग्ज़ाम है, RBI है, इफ्सका है, इरिडा, नबार्ड, कॉम्बो, सब पे ऑफर्स हैं, तो आप इसको ज़रूर अवेल करें अगर आप एग्ज़ाम्स को देने की सोच रहे हैं। अभी सेबी, इरिडा, नबार्ड सारे एग्ज़ाम आने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।